Good afternoon, everyone. So I welcome everyone on behalf of Advantage Vidarbha in association with Association of Industrial Development. The track supported by incubation and the ecosystem partners, GH Raisoni, TBI Foundation, INFED, IM Nagpur. Vidarbha Entrepreneurial Odyssey. So we are starting with our first track, Fireside Chat with Varun Alag, moderated by Mr. Shashikant Chaudhary. I request our speaker, Mr. Varun Alag and Mr. Shashikant Chaudhary to join the dais. I request my team to please welcome Mr. Varun and Shashi ji with the floral welcome and our token of gratitude. And Devik Moringa, startup supported by INFED IM Nagpur. So a token of gratitude from their end as well for the dignitaries. I request Shashi ji to please welcome our speaker. So Varun is a co-founder and CEO of Mama Earth. The vision behind Varun and Ghazal are the power couple leading the Mama Earth, Asia's first maid-safe certified brand. Varun has completed his engineering from DCE and MBA from XLRI. Varun is the driving force behind Mama Earth revolutionary products. Innovation and conscious parenting, so together they have redefined parenting, introduction and the innovation for the safe product for the families and the babies. Mr. Shashikant Chaudhary, he's a serial entrepreneur, currently a co-founder of Happy Eater and Babyverse, that is his 10th venture. He has invested in more than 30 very interesting startups. He is the limited partner in a leading seed funds like Bloom Venture, IIFL. He was the managing director India for Global Logic. And he's managing more than he used to manage more than 4,000 engineers in India in the Global Logic that was acquired by Hitachi. And the valuation closed for that is 9.6 billion. He has been awarded for Global Nagpur Award for bringing Nagpur on the IT map. So over to you, Shashi ji. Good afternoon. Good afternoon, everybody, and very glad to have Varun over here. In fact, we wanted both to come, Varun and Ghazal, but unfortunately, Ghazal had some health problem, and therefore she stayed back, and it was good that she stayed back because it was almost for 4 or 5 days, as Varun mentioned. So everybody wanted you two people to be over here, but nonetheless, he came to Nagpur, and it's his first maiden visit to Nagpur. So very nice to have you over here. Very hectic travel in the morning and then evening flying back. So let's start with the initial, set of the questions, because people would love to know your journey, your challenges, and how really you overcame that. So where from this Mama Earth idea really came up from? And what was that point that you felt this is perhaps a very good idea to execute on? What were those insights during that journey from an idea stage to really committing on that? Thank you first of all for having
me as a part of this amazing event. And loved coming here. Right? Suna bahut hai, pehli baar aaya hu. I hope you guys are comfortable with Hindi, English, both, right? Combination bolne chalega na. And I wish yaar, and मजा आती नहीं जितनी सिंगम ने सिखाई उतनी आती मेरे को तो but thank you for having me here. And, I think Mama's story is a very personal story of how we started this, because we became parents in 2014 and August our first son was born then, and that's when we started sort of, ऐसा नहीं उससे पहले we were not using personal care, right? But हमारा relationship with personal care was very platonic, right? We didn't care as much what we were using on our body, etc. But when it came to deciding what to use on our child, and I think we were like, we were very paranoid. And it was our first child, so all parents are. And that's when we started sort of, and with the smartphone in your hand and Google, always there, so you're able to research. All of us become scientists, right, and doctors nowadays. Right? So our doctor actually used to call us Google parents, because we used to like research everything and go to them. And basically, we used to just get a reinforcement that whatever we are thinking is right, and this is the medicine that we should be taking, right? Just give us a prescription. So that is the kind of, environment we were coming from. And in that environment, clearly, when we were researching for quality baby products in India, we came across a lot of negative noise around toxins and how the local regulation wasn't as strong around ingredients being added to personal care products, and because of which a lot of ingredients which are banned in different countries, right, in a part of what they call sin list or hot list, were actually being used in products here, and that just scares you. And a lot of these ingredients are linked to cancer, and that becomes even more scary because you don't want to see that word around your baby. And going through that problem is when we felt clearly there was need for a brand. Sorry, there was a need for a brand which is certified safe. Right? But while problem existed, we also wanted to understand two more things, right? Which any, for example, entrepreneur should. Right? One is it doable at the right price? Right? And second, is the time for it now? Right? Because while there are a lot of ideas, right, most of the times the answer to the following two questions decide if the business can become large or not. Right? Which is that, can you do it at the right price? Right? So India is all said and done, while a large market, but on an average, it's not a very high-paying market, right? So you have to provide products at the right price. And we first researched and figured how we can offer it in the right price range. And we felt that it can be done. And secondly, we figured that, with e-commerce and digital, clearly there was a new playbook of building brands which was awaiting this country. Right? Because earlier, the only way you could reach out to consumers was traditional media, which was very expensive, like television, print, etc. And you couldn't target the right kind of people, right? I mean, who are looking for certain kind of solutions or products. And with digital media, you could do that. And the other big problem with consumer brands in India was that distribution, right, was actually the king and queen, right? And only the companies which had wide distribution, right, were the companies which could build large businesses. I think e-commerce clearly broke those geographic barriers, right? And with one warehouse, you could actually service the stretch of this country, and it's a very wide distributed income country. So when we felt the answer to both of those questions was yes, right, is when we decided to quit our jobs in 2016, and we decided to work full time in shaping this idea. It took about 7 months for us to come up with the first set of 5 products, right? And yeah, the rest is history. So interesting. We are improvising here as we speak. We have only one mic, and as entrepreneurs, we'll have to improvise because all those mics have gone to a central hall. But we didn't want to, delay this program, and we said on the fly we'll improvise. I will ask, and he will answer, and we'll share one mic. So that is shared economy, what we are doing right now.
So coming to the point that you now decided to start out, very crowded space though, in a way, because this space has been there for a long time. A lot of big players, big companies, even from the US and all those things. So what were the initial challenges for you as a startups when you were in the initial phase, after the idea phase? What were the initial challenges? And if you can, give a couple of examples and how did you overcome that? I think, of course, the category that we were getting into was competitive, not just competitive, but it's also a high level of involvement category, right? I mean, it's a category where mother is choosing a product for their child, right? So both high involvement category, it's also a very high trust category, right? And I think hence the first and foremost and probably the biggest challenge was how do you build trust, right? And honestly, for any new business, right, that is the first underlying challenge, right? Which is how do you build trust in your product, right? When you're going to your consumers, when you're going to your customers. So I think that was a challenge for us as well. Right? And if I was to give references of 2-3 things which we sort of, felt on how you can build trust. And trust is actually a very emotional concept, right? It's a psychological concept. And, so you need to know how humans operate, right? We all run human-to-human businesses. You might be in AI or you might be in baby care products, right? Finally, who you are serving to is a human who's going to take a decision, right? In should they buy you or not, right? So consumer psychology trust में काफी important role play करती है, and that's how the things that we initially studied and saw. So for example, trust is built when firstly and you're willing to hear a story, right? And otherwise your guards are always down, right? कि मुझे क्यों सुनना है किसी नई चीज के बारे में, right? So how do you create that interest, right? So we felt that if the brand will say I am free of toxins, right, probably less people will hear it, right? But if someone external comes and gives us a seal that we are free of toxins, right, it will be a great way to start a conversation, right? So which is where we worked with this non-for-profit organization called madesafe.org, right, which was a US-based NPF, and we said कि जब तक external certification or seal नहीं मिलेगा, we won't launch, right? And hence only when we got the seal is when we launched. And when you take that story and when you talk to a mother that this is Asia's first MadeSafe certified brand, right, it puts the guards down and then you can have a conversation. Then trust is built if you reach through the right circle of influence, right? For your buying journey, and you could have a SaaS product, you could have a product like a baby care, and there is someone who influences that decision in your consumer's mind, right? And in our case, there are 2 influencers which we recognized. One was the doctor. And in the 0 to 6 month journey, the doctor influences. In the 6-month journey, right, actually a new influencer comes in, right, which is another mother. Right? So a sister who's an older mother than you, a colleague who you trust, right, and is another mother. Right? In fact, even because it was a social world, right, even a Facebook group, right, on which other mothers are talking about and become influencers, right? So we actually tapped into that, right? And our underlying insight became moms trust other moms, right? And if you can get moms to try your product, right, and actually share reviews around it, right, then people will pick up. And the third thing that we, again, is the underlying, trust insight is social proof. And when you see other people sort of using something or talking about something, automatically you believe that something must be right, for you to try that, right? So I think that's the third thing that we focused on building, right? But trust was the biggest challenge, right? And these human psychology pieces is what we use to overcome that challenge. Interesting, you mentioned about that psychology part of it and storytelling part of it. And I heard Ghazal in one of the interview. She mentioned that one of the biggest emotion that mother has, and that emotion is the guilt. And she feels, as a mother feels that whatever happens with the kid, she is responsible for that. So in terms of at one end you have this, getting into the influencers and getting your trust being built.
At the same time, you are trying to appeal to the emotional side of the mother in terms of positioning your product and conveying your message. How that was done, basically? No, I don't think we played ever on the guilt side. That said, we did talk about a shared journey, right? So the fact that we were parents, right? We have gone through a certain journey and problem, right? And we understand you, right? And we are right here, right? We are available on LinkedIn, Twitter, right? Instagram, right? You can see us. You know the people behind the brand, right? And that makes a difference because mostly, right? The other companies and brands that you deal with, and you don't know the people behind the brand, right? You do believe they're trustworthy brands because they've been out there, and, but there's no one who's standing and saying, hey, I'm here, right? And I'm building this because I believe there is a need for a change, right? And I've gone through this story, which is also your story, right? And hence, that's the story that sort of helps build that trust. So again, I mean, always in the journey, there are times when you need to pivot or you need to change the direction, or maybe in the journey, as you start out with some set of assumptions, things change, customers give you feedbacks, and there are some very unique insights that tells you, oh, you need to do this particular thing in a certain manner. Did you get, or could you share a couple of those customer insights which shaped your journey of the company or the product per se? Oh, there's so many. We're a very, very consumer-focused company, and we talk very, very intensely to people who buy us and people who can buy us, right, to take decisions, right. But if I was to highlight one, I would say about 3.5 years back, right, during our extensive consumer research, one of the things that we started realizing was that you cannot box the consumer into this is a natural products consumer, right? I mean, you can't say, my consumer is XYZ and she buys natural products only. And we realized that the same consumer who was buying our natural face wash or shampoo or a baby product, but was also buying a very different product for her acne needs, which is more of a scientific or a dermatologist product, right? And was buying a very different product when it came to her, occasion needs, like when she had to dress up, right? And hence our wallet share, right, of the proposition that we were serving her with, which was a naturals proposition, right? The share of the wallet share of that proposition was limited even with this consumer, right, who was buying us, right? And if as an organization, right, we have to exist to serve her beauty and personal care needs, right, we will need to come up with differentiated proposition platforms, right, that can serve her in different occasions. Right? And I think that insight led us to then start and craft a house of brands journey, right, where we launched the Derma company, which is focused on scientific, research-based dermatologist design products, or Aqualogica, which is based on the insight that Indian tropical weather does not need heavy creams. It needs light hydration, right? So I think being able to sort of get that mindset that, while Mamaearth is what we started with, right? But if we wanted to be an organization which serves all the needs of this consumer, we have to build different brand platforms which do it, right? And then launching on that journey was a pivot that helped us a lot. Pretty impressive in terms of like how you adopted your positioning and in terms of the journey of your customer and different needs, but using a different plan of getting into the different brands also. Very, very, very interesting, I would say. Not easy thing to do. In the journey, when you are building a company, there are situations where you need to take tough decisions. Can you just tell us where, a couple of incidences, or maybe one incident there where, there was this always, two sides of the game. On one, the decision had to be made. It had to be a tough decision. How did you execute, and what were the kind of things you considered while taking those decisions to overcome that situation? Again, so many, because
that's what a company is made of, right? It's made of all the decisions that you took, right? And usually the most, I at least believe that someone asked me one moment which made this company, right? I believe the moment when we realized, right, that everyday decisions and not one big decision is going to build this company, right? Was that one big moment when we started building it, right? But I think if I had to go back and talk about one big decision, it was during COVID. And I think as the COVID was starting, there was a lot of uncertainty, kya hoga, kya nahi hoga, 2020. I remember we had just sort of, closed in on our annual business plans with our board. Feb 2020, we were all sort of, geared up to sort of deliver spectacular performance in the coming year. And come 23rd Feb, right, things just, 23rd March, sorry, right, things just got closed down. And, you were in a state where you didn't know what to do. Right? And in a month and a half, again, we had a, board meeting, right? And before that board meeting, one of the dilemmas and decisions that we were working on was, see, this could either be seen as a challenge or it could be seen as an opportunity, right? Because, challenge because, it's very uncertain times. You don't know what's going to happen. Opportunity because that's how everyone else is thinking, right? And which is why everyone else will go conservative, right? And everyone else will play the defense game, right? And hence, if you were an aggressor, it was an opportunity, right? And we had to take that decision, and thankfully, right? I mean, we said, boss, one life, right? It is not like we come from a lot of money or wo, right? Worst case, we have to go do our jobs. We'll go do our jobs, right? But we have come here to hit big, right? Not to sort of, optimize for another day, right? So let's go aggressive, right? Let's see what it leads to, right? And that one call, right? And we convinced our board, people were a little sort of, worried, right? That, if it fails, then we'll have less money, and how will we do it? I was like, we'll see it when that happens, but right now, I think it's an opportunity. Let's see it like that, right? A lot more people are coming online, right? We are strong in online. A lot of advertisers are not advertising, so the cost of marketing is going to be very low. And thankfully, it shaped well, right? So, in fact, in just 3 months, we tripled. Right? And this is a consumer products business, so tripling in 3 months is a very, very big thing, right? Because, people were out there to watch content. People were out there to be served with products, and everyone else was like slowing it down and not serving, right? And it led to the largest sort of trial generation exercise that we did during then, right? And just changed the trajectory of the company. Pretty impressive. Moving your inventory like 3 times is like a huge, especially in the COVID times. That's a big deal for a consumer company. Little on the funnier, lighter side, which is the funniest customer feedback you received in your company from your customers, and did it lead to something else, or was it taken in that spirit? No, I remember very, very early on, right? This is like 2016, and me and Ghazal we had created a bit of a mix. We had the brand and the logo, and we had started pasting digital sort of, labels on products to just test out with consumers as to, how would they think about it? How would they? So we used to stand in markets, right? And baby care stores hote hain, where you get like all the baby stuff. So we used to stand outside those stores, right, with a small stall, right? And we used to talk to mothers, right? And we used to pitch the brand and product to them, right? As to ki ye bana rahe hain aap log, ye kaise hai, etc. And I remember Ghazal, like there's this nice Mercedes which came, and someone stepped out of it, right? And Ghazal was pitching the product to her, right? And she was telling her that, this baby wash has no sulfates, right? It has no parabens, right? And hence it's sulfate-free, paraben-free, right? And she was showing the label on which it was written sulfate-free, paraben-free, and like. Then she tried the product, and she was very happy. And
So we said, would you buy? And she said, yeah, I'll buy. But what is that free thing that you are giving with it? Can you sort of, add that to my basket also, some sulfate and paraben that, So that made us realize that, market and consumer education, right, is also very critical. Right? And the second insight actually we got from that whole exercise was that India, and especially markets which are at slightly lower level of Maslow's hierarchy evolution, and no negative propositions don't work. Right? So saying that I don't have this, right? People won't pay you premium for that. Right? You have to tell them, what do you have extra? Right? And what does that do, right? So, I mean, which is why we analyzed a lot of industries, right? For example, here, lead-free petrol didn't work, right? But when they got 95% octane petrol, which is value-added, right? The same thing, just marketed differently worked, right? So saying, I don't have this, right, won't get you a premium. Right? Saying, like, that's a hygiene, right? You have to say, what do you have instead? Right? That'll probably get you a premium. So. Very interesting insights in terms of, customer behaviors and how they really, give you that kind of a feedback. Now, a little about the people over here, because, most of the people in these startups in this region are in the early part of their journey. And obviously, you have reached to a pinnacle stage in terms of what every startup would dream for getting to the IPO. So we have discussed about idea, we have discussed about the initial challenges. Would love to know 2 or 3 strategies in terms of the scaling. How did you plan, what worked, what didn't work? That's what would be more interesting because it's coming from horse's mouth. Well, I think, every industry, of course, has a different playbook to scale. But if I was to say a few commonalities, right, I think scaling is a question that comes after you have done your PMF, right, where you are very confident that the product that you have created, right, for the market that you have built it for, and you have seen that connect really well, right, and you're very confident that it is the right suited product for that market, right. Once you have hit that, right, I think 3 things that, all probably successful companies do to scale is, one is distribution. Right? You might be a B2B product, you might be a B2C product. Right? Distribution, basically, how do you take your product to the right set of consumers, right, in the best possible cost? Right? Sorting that out, right, is the most important sort of, piece, right? And honestly, I've been surprised by, how, while of course we keep talking about technology, etc., and but sometimes the simplest thing deliver the best distribution channels for you, right? I mean, Policy Bazaar just went, public, right? And even till now, right, their best distribution channel is direct to consumer calling. And their call centers are the largest selling and sales generators, right? Because people want to talk to someone before they decide what insurance that they want to buy, right? So, I mean, so figuring out your distribution channel, right, and not getting persuaded just by shiny stuff that everyone else is talking, right? But what works for your business is very critical, right? Figuring out the organization, of course, I think that's the second most important lever in scaling, right? Which is, what is the kind of organization you would need to be 2 years down the line, right? When you scale, right? And how do you start investing in that today, right? Because it actually takes that much time to get there, right? And honestly, if you succeed, and the worst thing that most of us entrepreneurs do is we always prepare for failure, right? But we never prepare for success, right? And if you succeed, you'll be so far behind, right, in terms of your organization development, right, that you will already be looking at, oh my God, this organization has already become passé. I need to look at a different organization. So I think constantly building organization. And third, I would say, as a founder, you have to manage capital allocation and capital raising really well, right? So that's a very important part of the job, right? What is the
next capital that will be required to grow into who we want to be, right? And how do you allocate it most efficiently? I think those three would probably be the most important pieces. This is not still working. I think very, very interesting message when you get into a kind of a scale situation. At the end of the day, it's about the product, but it's more about the distribution. The distribution wins at the end of the day when you talk about the scale. So that's one of the key messages over here. So now we're almost done with the questions from my side. The floor is going to be open for 2 questions because we are already late and we are trying to cover as much as ground as possible. Therefore, I would advise the volunteers, if anybody has a questions, please be brief and instead of a suggestion, please ask a very pointed question. Anybody from the audience? So lady first. So can someone volunteer us? ये माइक नहीं दूंगा ये एक ही माइक है अभी लिस्टेड Do we have extra? Yeah, we'll paraphrase. नहीं वहीं से आप बात करो. We'll paraphrase. Yeah, honestly, I don't think it's about timing. Right? It's about the category that you're in, right? And the level of involvement the consumer has with that category. Right? How much do they research online before they make the decision offline? Right? And for example, in our category now in beauty, right, a lot of research and brand building happens in online. Right? And consumers just purchasing offline. Right? And hence for us, right, for example, our second brand, the Derma company, is almost 500 crores now. Right? And it's still not gone offline. Right? You can become so large online because it has that potential. On the other hand, right, there are certain categories which, one, because of the touch and feel nature of those categories, two, because they are far more impulse and you don't research, you don't start your journey on the internet. And actually might be far more suited to starting offline. Right? For example, fashion is one category, right? I mean, you would have heard the Zudio story very recently into mass fashion. Right? And it's a full offline story. They didn't need to start online and get into offline. So I think it's more about the category that you're in. Hello, sir. So I have a question. Hello. I have a question that in your category, cost of acquisition is very high to acquire a customer. So how do you optimize that? And also, how you retain the customer? So this is the 2 things, because in order to get in profits, we have to retain the customer also. Yeah. The answer to both of them is a great product and a differentiated product. Right? If you have a differentiated product, right, your ability to acquire becomes easier, right, because you're not saying the same things that everyone is saying. Right? 2, if it's a great product, right, your ability to repeat also is high because the experience on the product is higher. Right? So I think till you don't have that, all marketing is just, Hi, my name is Cecilia. I'm from Norway. It's very interesting to be part of all these entrepreneurs. I'm looking to hear more stories. I have a question. What is your top product and why? Got it. Pleasure to meet you. And in fact, one of our largest public market investors is also from Norway. Norges Bank is invested in us now. Right? Congratulations. Very well. So our top product is actually this product called Upton face wash. Right? And the underlying insight that we got on was the fact that, a lot of globalization and global brands were participating in the India growth story. Right? And
But what gets forgotten is certain categories have a, ma'am, please, you can have a seat. I don't want, I can't sit with you standing. Please, otherwise I'll need to stand. No worries, right? So what gets forgotten is that certain categories have a very, very strong cultural nuance, right? I mean, India has had like, over 5,000 years of recorded history, right? And that recorded history actually has mentions of beauty, and as a category, and things which were used for beauty enhancement, and which go back 2,000, 3,000 years ago. And hence, our traditions are transferred from generation to generation. Right? But no global brand can really bank and build on top of those traditions. Right? And which is what we realize, that as a local brand, right, you can actually build on top of those traditions. So Upton is actually a recipe, right, which gets used in Indian weddings, and in fact a day is dedicated, right, and a ceremony is dedicated in Indian weddings to use Upton, right, and look good, and with that Upton, right. So that's the belief that people have in that, what you can call kitchen sort of recipe, using that belief, right, and actually converting it into a ready-to-use face wash, face mask, right, we could build like it's a 200 crore product now, right? So that probably answers that question. Thank you so much, Varun, for the wonderful insights, and Shashiji. I request one of the volunteers to present. Yeah. So I request Dr. Shivaji to present the token of gratitude to Shashiji. So the next track is Keynote Speaker. So our speaker, the keynote speaker, Ms. Vani Kola, MD Kalari Capital. I request Vani ji to please join the dais. I request Mr. Nitin Sachdeva to please welcome Vani ji with a floral welcome and token of gratitude from our side. And Devik Moringa, startup supported by Infit, has also presented a memento for the dignitaries. So Devik Moringa is our own Nagpurian startup, and that's a token of gratitude from their end as well. Yeah. Thank you, Mr. Sachdeva. Yes, over to you, Vani ma'am. Yeah, we do have. So, ma'am,
Good afternoon. I think startups definitely know about always the demo going wrong, right? So we'll figure out how the clicker works and then see if we can get started. But earlier, somebody said, what made you come here? And, I really have always believed that there is a very important role that a startup ecosystem plays in the economic development of any country. And of course, startups have a boldness, sometimes we call it foolishness, to believe in change and be able to truly imagine something that perhaps most of the time the world says not possible. And sometimes that provides the impetus also. How many of you watched 12th Fail? Many, right? So, the non-believer also plays a role, right? So I always say when you come to a venture capitalist office, some will say yes, some will say no, probably more no's than yes. But that should not deter you from your sense of core belief, because you're seeing something into the future. Whether others can see it or not, you should just continue to work on your conviction. So I know we have a short time, so if we don't have a clicker, would you rather you just move the slides or something? Okay, so let's just do that. Are they able to project the slides? Or maybe... I don't think there is a... That's not my slide, that's your slide. Okay, so... but I think the part of coming here is, I think, the entrepreneurship genesis, which almost none of us could have imagined how much has transformed. I remember coming back to India in 2006, and almost everybody asked, why are you coming back from Silicon Valley, the center of entrepreneurship, to India? And I think it's the same answer to why are you coming from Bangalore to Nagpur, right? I think there is a journey of entrepreneurship that is a moment in time in India. In 1985, when I left India to go to US, I don't think we could have imagined that it's possible to democratize entrepreneurship, which means that anybody who has a vision and with hard work could try to pursue their dreams. But so much has transformed, and in 2006, I really felt that India was on the cusp of making this leap into entrepreneurship journey. And so today I feel that that is explosive across India into every hinterland. So as much as, if you look at any startup funding, and if we look at our own sort of history over the last 15 years as a firm actively investing into seed, Series A companies, it follows the same trend of overall in the country. 40 to 50% of our investment goes into Bangalore. Maybe 15 to 20% goes into Delhi. A similar amount into Bombay, and the rest into Chennai, Hyderabad, maybe some ancillary cities like Pune, and so on and so forth, right? But I think over the next decade, we'll see this significantly shift. Some of it is this kind of awareness, but some of it is also just the trickle-down effect of entrepreneurship being an acceptable profession, if anything, even a preferred profession at some point in your career journey. So let's see how this is going to work. Will you change my slides? Or do you want me to click, or because I can see that the slides are projected? You'll change? Okay, fine. So I was asked to talk about what do you see as the future for Indian startups. So I just think that, as I said already, we are in a very interesting time in terms of the growth of digital GDP within the country. So if you look at, can you change the slide, please? If you look at any of the core markers, just keep
Can you change, please? So you just look at this, and most of you know most of these numbers, but just thinking about it as a overall, where is the digital penetration and how that is going to accelerate over the next decade, I think there is an unprecedented opportunity. You just heard Varun, who's built a very big brand, and what was the problem for people before to build that brand? Was it that there were no Uptan products? That's not true, and I see very few women, but you know there were plenty of Uptan products available. I'm assuming more women use that product than men, but but they were available. But what was the problem? The problem is the distribution problem. What has changed in India, in digital India, is that you can get that distribution without a huge cost, and that doesn't become the barrier, like a HUL or somebody always owned the distribution network. So even if you had a great product, how do you get it to the customer? So that was, of course, always the challenge. So how do you reach the demand, even if you had the product and the supply? So I think what has happened is that the opportunities that have opened up for entrepreneurs at a lower cost. Yeah, this is working? Yeah, okay, great. Thank you. So at a lower cost, to be able to test quickly, and if it doesn't work, to continue to pivot, hopefully before you've burned too much money, because there's only a certain amount of money, certain amount of runway, and certain number of times you can pivot. But I think that what we are seeing is digital disruptive models across every domain. You can take something as old as agriculture, and even that, of course, it's not just simply how do you bring a marketplace to change the fragmentation of price and bring better price discovery through marketplace models. Of course, that is there. But even at a more deeper level, from core technologies, even in whether it's old industries or emerging industries like social commerce or content or whatever, that's changing. So what I thought I'd do, since I didn't know exactly the audience profile, is to share with you a little bit about how we are thinking at Kalari on many areas of disruption over the next decade, and hopefully that'll be of a little bit use. So all of us know how infrastructures play a key role. We know from the Golgappa person to any other larger peer-to-peer or even business transactions today is dominated by the infrastructure that was built using UPI. And I think what's great is the government infrastructures is also fueling the digital economy. And while it's easy for us to see the fintech revolution, but this is happening in almost every sector, right? It's happening in health, it's happening with ONDC through enabling retail commerce and so many areas. So I think this notion of building a public infrastructure on which entrepreneurship can drive value add, but brings the cost down, the unit economics down, so that it's accessible for everyone, is really a phenomenal reason why I think we have this acceleration of solutions that will create more and more imaginative, disruptive startup solutions. And this same thing, like I said, is happening across every sector. And we all know now that India just simply loves consuming content. If you take from a decade ago to today, you simply see this in your own home, I'm sure. Some of you are quite young, but I remember the days where 30, 40 of us probably sat in a small room. It could be your own house and the neighborhood is in your house, or it's a neighbor's house and you're in their house, watching a small black and white screen and, just enjoying the evening. Good or bad, sometimes I'm sad about it, but everybody is watching a screen in their own room today, not even with their own family, let alone with the neighbor. That though is gone a long time ago, right? So, but nonetheless, it's inevitable that there is a personal device that allows you unlimited personal, recommendation and personal choice on how you spend your time, and the explosion of content. And that's not just in
area of music or video, but in almost every area, even in shopping, right? If you look at the rise of social commerce, or you look at live streaming, in every area, the level of personalization that is possible today, and hence the new solutions you can drive because of that, I think is enormous. And what this has done is driven enormous amount of creator economy, and I think that's something we'll see as a large contender in terms of being able to disrupt models for newer products from creator and influencer access to be able to drive distribution more efficiently and new products more efficiently. And, continuing on being able to consume content, of course, the business models have shifted because of that, because the rising digital ad spend because of content consumption has completely disrupted how you may fund product discovery and how you may even sell products, right? Now, we may not think about this as something fundamental as you are consuming the content, but if you are building a brand and you're building a product and you're building a distribution, it almost is like a new alien planet. If you came from the era of traditional retail and traditional product supply chains and traditional product distribution models. And so I think sometimes that's why the incumbents don't transform as quickly, and it allows for new age companies, which is the reason why everybody is here, to think about how you can build your own startup. So I think we see a lot of this rapidly changing the customer loyalties and customer access. So, and while we talk about India to Bharat, one enormous thing that has happened is India, from being a services economy, has over the last decade transformed into a product economy from global software solutions. And this is going to continue to accelerate, right? I think to be driving over 30 billion in annual revenue out of India for global purchases is not a small feat, and this is just in the last decade. And this, I think, has an opportunity to triple, quadruple in the next decade to come. So India to the world, I think almost in every sector, whether it is how do you provide salon software, to how do you provide banking infrastructure software, I think that's also growing very, very rapidly out of India. And one thing, why it matters, this event, the Advantage Vidarbha, is if you think about 15 years ago, you couldn't have foreseen this hub developing. How do hubs develop? How do ecosystems develop? Chennai has, of course, emerged as a SaaS hub. But why is that? 2 or 3 companies that tremendously succeeded in proving that you could build a SaaS company out of India, and that knowledge then creates concentric circles of trickle-down, mentorship, access, experience, funding, and so on and so forth. So I don't think you could have predicted 20 years ago Chennai will emerge as a SaaS hub, and Bangalore, of course, for reasons that we know historically. So I do believe that new hubs will emerge when the ecosystem allows for some risk capital to exist locally, because you have to know the people, you have to be able to access the people. So I was very happy to see the amount of accelerators and angel investors here in this region, because it has to be nurtured. Of course, I'd love to invest in Nagpur. Somebody asked me this question earlier. We are not a regional fund. We'll invest wherever we can. But the problem is, how do you find me? How do I find you? Right? So, and sometimes the local angel networks, the local accelerators, the local incubators become very, very important links in the chain to make that connection happen. And I see tremendous amount of that happening here. And then when you see 1 or 2 companies achieve that scale, then
the multiplier effect happens very, very fast, right? And I'm hoping that definitely happens here and in other centers across India. So the other thing, which of course with the wonderful education institutions that are here and in other parts of India is also emerging as a innovation hub. The rise of deep tech in India, I just met the brick company and their investors are sitting here, and I was fascinated with the cutting edge technology emerging from here, right? So I think deep tech, like SaaS, is very, very important because not everything can be just product and service. You have to be able to hold from a global perspective. And if you look at top 5 technology companies, they come from US, and over the next decade, there's no reason why globally large technology companies cannot come from India in AI and robotics and many other areas. So these are some of the areas that we are actively tracking and believe that they can emerge from India also, right? And of course, climate and sustainability matters world over, but the opportunity out of here is, like always, we can do it at a different cost unit economics, which matters to a large portion of the world, right? With over 7 billion people, the developed world, only contributes to about 1 billion people's needs at a very high price point. But for the rest of the world, that is absolutely not affordable. So to be able to develop solutions that from sustainability that are also cost effective has actually a fairly broad global impact, and we see a lot of the tech emerging from India being able to do that. So this is another area. And I didn't mean to cover exhaustively all the spaces because today out of India, almost every space is ready for disruption. But I wanted to just give small insight into a few areas and how we are thinking about it. But the one thing, like I said in the beginning, is the inevitable rise of entrepreneurship beyond tier 1 cities, which is really where most of the funding has gone, to entrepreneurship emerging from almost every corner, wherever those ecosystems exist. And, I'm very excited to see that come about from Nagpur, from, every other region. So why is that? Because, again, if you look at what has happened in the last decade from entrepreneurship, already this is the second, third startup economy globally. And, today, if you look at the amount of angel funding and the number of accelerators that have raised, that have come about, I think they act as catalysts. They act as catalysts for risk entrepreneurship and then, be able to reach other capital sources more effectively, more easily. And I think from 15 years ago to less than 10 incubators or accelerators in the country, we have over 300 such institutions or initiatives rather across the country. So the scale has exploded in terms of this. And of course, the primarily digital adoption today, the first wave was urban, predictably, but today that growth is not coming from urban at all. So for every founder, how do you reach the other India, is extremely important. And there I think the non-metro may have an advantage because, maybe you're closer to the consumer, maybe, that testing is the minimum viable product and the go-to-market testing is at a lower cost basis. So I think the digital drive for the next decade is happening outside of urban. And that's where, again, the tremendous amount of opportunity for how tier 2 and beyond will play an active role. So these new markets that are opening up and new consumers that are opening for digital India, and the new preferences that are emerging, right? Maybe they are old models. If you look at social commerce, trust-based buying in small groups existed, but it is just that it wasn't organized in an efficient manner. And that's really what has happened. So new solutions that reach create access more effectively.
And what does all this mean for us here, right? I hope it means that people see more opportunities for entrepreneurship, and we somehow figure out how to connect with you in the most efficient and effective way also, right? So that's really what this means to why this event and these conferences are, and this gathering rather, is very, very important. So to do that, I think you do need effective platforms, and I think Nagpur already has that, as we spoke in the beginning, both from education, mentorship, and access to capital, the three critical ingredients for ecosystems to develop. So I just wanted to share these thoughts, and thank you for having me here in your wonderful city. Thank you. So, ma'am, please have a seat. Yeah. So thank you so much, Vani ma'am, for sharing all the insight, like the digital innovation, the adoption, the tremendous opportunity which we have, along with the startups and the economy and the growth. So thank you so much for all the insights. So moving ahead with the next track. So I would request Mr. So our speakers for the first track, the panel, Navigating the Investment Landscape, Seed to Growth. So our first speaker is Ms. Vani Kola, Managing Director, Kalari Capital. Our next speaker for the track is Shyam Menon, Founding Partner, Bharat Innovation. I request Mr. Shyam Menon to please join the dais. Mr. Ashish Fafadia, Partner, Bloom Venture. I request Mr. Ashish to please join the dais. Mr. Sandeep Agrawal, Founder, Droom and Shop Clues. Please, I request Mr. Sandeep Agrawal to please join the dais. Okay. I request moderator for this session, Mr. Vaibhav Vardhan, co-founder and CEO of INC 42 Media. I request Mr. Vaibhav Vardhan to join the dais. So I believe this track is really going to help all the startups navigating the investment landscape, seed to growth. So I'm sure a lot of startups who have joined here, they are really willing to understand how to take their startup from seed stage to growth stage. So I think there's a slight delay of 5 minutes. I request everyone to please bear with us. Yeah, but I'm sure you all have a lot of questions and how to take your venture to the next level and how to even start also. I'm sure there will be a lot of startups. They might have some of the questions, how to start. So I think we can have 1 or 2 questions. So we can pitch in. It's a great opportunity. I think 1 or 2 startups can ask their question till the time we start. So I request one of the volunteer if. Okay. I request Mr. Jay Chopde to please join the dais.
Can everybody hear me at the back? Yeah? Okay. All right. So thank you, Vani, Shyam, and Ashish. Appreciate you guys joining here. So, I mean, typically, when we start talking about seed to growth, and I'm sure you guys get this question a lot, even from tier 1 cities, where an entrepreneur is always, the first thing they want to know is, what criteria do I have to hit for you guys to invest in me, right? So, if you could, and again, I think a lot of times entrepreneurs are also confused about an early stage fund versus an angel investor versus a Series A and all that. I think that education is a lot better in tier 1 cities. In the tier 2 cities, there is still a bit of a struggle to understand. So people end up approaching the wrong investor for the wrong thing. So just want to hear from you, in terms of, what should an entrepreneur do when they're looking for funding? And if they approach you, what are your criteria? Sure. Thank you, Jayant. It's a pleasure to be here. Thank you, everyone. Jayant, to be honest, I think the digital resources have pretty much made it possible in terms of awareness that whether we are in Nagpur or in a similar session at maybe a different scale. I was in Bhubaneswar last year, and maybe a few other cities that I can recall over the last few years. I think people are savvy, people are well versed with at least what is it that they should do in order and get where, in front of who. So whether Bloom does early stage, whether Vani is writing growth checks, that clarification largely is there. And it also kind of helps because most of the investors also are much more at the grassroots through the digital mediums as well. In terms of the other part of the question that you asked as to what is it that people should do as they are approaching us, I think 2 or 3 fundamental things straight from the heart. Now, first and foremost, I think if the founder has made up his or her mind that I want to step on to the world of raising capital externally, that means you have taken a conscious call that you're not running a lifestyle business, you are going to run a venture scale business. In that kind of a scenario, you have a further sub-question that you have effectively answered, that if I want to go down the path of VC and approach an institution, there definitely is a little extra level of clarity of thought as to what you want to pursue and why you want to pursue. Enough people, when they don't, it is important that people should answer that for themselves. Lifestyle businesses is not a bad idea. After all of the noise that all of us do tend to make, we are still less than 10% of the country in terms of the GDP contribution. At its peak, we will still be less than a third, is my guess, right, over the next decade plus. So it's perfectly fine to run lifestyle business. It's perfectly fine to grow 10, 15 years, raise debt, go to a private equity shop, then raise a public company. Of the 6,000 companies listed on the markets, most of them have grown that way. So now coming to the core, we are taking a decision to go down the path of running a venture-backed business. I think venture-backed business ain't coming if we are not looking at something which is a little more radical, which means you are trying to disrupt at scale. Disruption without scale ain't getting any venture interest. It's a mega large business market. You may be the best of the founders, the most talented, but the degree of insights that you can crack in a mega large market is what excites an investor. Because an investor who's coming in at an early stage, be it anybody of us on the stage, are eventually also funneling our companies out there for a larger investor to come in. So it's a big scale, mega large opportunity that matters. And finally, one has to acknowledge the fact that you're signing up for a 20-year journey. We are not looking for businesses that are saying that I'm building so that XYZ large enterprise may acquire us. That is a byproduct that can happen. That's an accident which is welcome if it shapes up that way. Nobody is cribbing about a company that raises $3, $4, $5 million and gets acquired 5 years later, delivering only a 4x. It's perfectly fine. It is still going to be a stellar outcome until the fund ends. But that is still a byproduct. That's not the main core that we are looking for. So these were a few top of the hard thoughts. We'll pass it on to other speakers and turn it back to you. Yeah, Shyam, if you could articulate, when somebody comes to you,
what should they have done for you to say, okay, this looks interesting? Fair enough. No, thank you for the question. Can you hear me? Yeah. It's fine? Okay. So we are a little bit more of an early stage deep tech fund. I mean, what it means is we look for startups with IP. There has to... Hello? Okay. So what it means is we are looking for startups with some IP, some strong IP, typically with a global market story. So there has to be, it's not just a company with an IP that is relevant from an India perspective. It needs to have a global market. And we tend to typically look for B2B businesses. Now, that's just a differentiation we have chosen as a fund. But it's an indicator of a big potential market out there. That means we believe that like in IT services, which played out in India in the 90s, where you could actually build services companies from India which could take on the world, we do believe going forward in products and solutions as well, India is going to be a really good stomping ground. You're going to be able to do really high quality tech products from India, which is built for the world. You will be able to build it at probably a fraction of the cost. And you can still, because you have strong IP, you will be able to command a good margin in these businesses and scale these businesses globally and not make it be just about India. In terms of where we enter what in typical parlance is called pre-series A. It's generally about $1 to $2 million worth of funding. And typically when there is a technology IP with some proof points in India, may not be yet global customers or anything, some proof points. Once we enter, we try and help the companies to grow to get to that next level where they are able to, grow their products and actually do more sales globally and grow. That's where we come and continue to invest. So from our perspective, it is a little bit IP heavy in terms of the kind of things that we tend to look for. But broadly, you need to have a good large market size and have some strong IP. And that's the core essence with which we particularly look at the company. And I'm really glad to actually be in Nagpur. I studied here. I studied in VRC or VNIT. So I'm really glad. 25 years since I graduated. So first time to be back in the city for the last 25 years. So really glad to be back in Nagpur, actually. Thank you. Thanks. Welcome home, Nagpur boy. And Vani, would love to get your thoughts. Same question. When somebody comes to you, what should they have done for you to say, I think we can invest in this? I think Ashish and Shyam answered it and answered well, and the answer is the same for every investor. So the question really is not so much what do I want to see in order to invest. I think you ought to ask yourself the question, what are you looking for, right? And is there an alignment or not? Because what we are looking for, this is going to sit somewhere on the internet. You can watch it. We are quite vocal about it on our own websites and through many channels. So what am I looking for is not a secret, okay? There is probably 20 talks and 200 blogs that explain what I'm looking for, right? So the question is, what are you looking for? And I think that is rarely something founders think about. For example, I'll give some mundane examples. And this happens, by the way. Somebody walks into our office and says, I already have a term sheet. This, in fact, happened last week. And said, we already have a term sheet from somebody. We have only 1 week to sign it. Can you beat this term sheet? Bangalore mein bahut hota hai commute ka time. Why did you waste your time? Because we don't do that, right? And I say this openly. Somebody may do that, not right or wrong. I'm not saying that's a wrong thing. But because at Kalari, we have our own madness, our own philosophy. Madness is same as philosophy, which we think we should understand the thesis. We think we should develop conviction around the founder. We want to understand your business model. How are you thinking about unit economics? Maybe you're a young company and idea-based, but I still want to understand how are you thinking, what your hypothesis of unit economics is. So there is time that we need to arrive at an investment decision. We will not, under any circumstances, try to bid on a deal which our friends may be investing after spending 3 months and to take that deal away from them. So we feel like we have a momentary party. There's no party in that.
because, you know, we are not in the business of stealing anybody's deals, right? So I think that then don't waste your time coming to us for that reason. And like that, I can go on, right? We are a certain kind of an investor. There are many kinds of investors, right? The decision making, we look at large markets. Of course, anybody puts on their money is putting to make money. You are investing your own personal money, depending on the risk you're taking. If it's an FD versus, you know, equity, small cap versus large cap with dividend, the returns are different. It's as simple as that. You know, this is also about economics. A investor, depending on the stage of the company and the risk, has different expectations of returns. This should cause no confusion, although it causes a lot of emotional confusion and emotional trauma that investors are not supportive, this, that, and all the other. No investor is not supportive when you are making money, right? So that is given. So I think you have to assume that investors need to make money, and they have certain criteria by which they evaluate the probability of doing that or not. Nobody invests money knowingly that they are going to lose money, right? So that is given. But you have to do research on, is this the right investor for you? You know, for example, at Kalari, we take an active board seat. Some don't. And again, like I said, that's not a good or bad thing. Do you want an active board member? Or do you looking for somebody that gives you the money and is not involved? That's your choice. Okay, it's not my choice. I'm very clear what I want, right? You should be very clear what do you want. And the misalignment, if it happens, is not good for you, but it's also not good for me. So we try to take the time to understand, are we aligned in vision, your conviction of whatever you're going after? Can I believe in that? Okay? Are we aligned in values? Because we have to work together and see each other at least every quarter, sometimes more frequently, for the next 5-10 years. Earliest will be 5 years, maybe 10 years. So if you're going to spend 10 years with somebody and you don't have value alignment, what do you think is going to happen? As much as that's my responsibility also, it is also your responsibility, because after all, it's your company, it's your dream, your vision, your sweat and blood, to see if you're aligned with that investor. So get to know that investor. Don't try to make a fast decision based on valuation. This is the thing that I wish we could speak from a loudspeaker every day, because sometimes people say, I got 10% more valuation, so I'm going there. But that can't be the reason. It's nice if you get the 10% or whatever more valuation, but in the long term, your success is not dependent on that. So what is it that you're hedging? You need to think about what you have to hedge is, am I going to be able to work with this investor in a way that is conducive, constructive for the next 10 years? That is worth more than whatever that small valuation difference that you're trying to optimize. Don't optimize that. Optimize success in the scale of success in the long term, and for that, alignment with your investors is very, very important. So ask the question. You can look up all of us. All of us would have spoken somewhere what we are looking for. So don't ask that question. Think about what are you looking for from an investor and see if there is alignment or not. Okay, thank you, Vani. So, so let's say, you know, let's say I have a mass appeal idea. Let's say I have an idea that not only appeals to somebody in India, but outside as well. Let's say I have some intellectual property. Let's say I've figured out that I want, you know, Kalari Capital to be my investor. And I have now come and I said, hey, this is my idea. This, you know, I've studied you. I want you to be my investor. Now you are telling me that, hey, I'll take a board seat. So as a good segue into our topic, which is seed to growth, how will you help me to go from, you know, where I am and where you think collectively together we need to be? So the generic question is, how does a venture capitalist help me to go from that early stage, you know, holding my hand to sort of show me how I can run? Like, I am walking. By the time I come to you, I'm walking. Now you are going to show me how to run. And how do you help me sprint?
So if you could each take a turn. Okay. Okay. Yeah, so let's start with... The founder. Founder, yeah. Let's start with Sandeep. So, apologies folks, हम थोड़ा लेट हो गए. तो कितने founders हैं रूम में? देखो ये सर कितने और कितने investors हैं रूम में? स्टेज को छोड़ के. अच्छा जो लोग कुछ नहीं हाथ उठा रहे हैं वो इन्वेस्टर बनने वाले हैं, फाउंडर बनने वाले हैं? फाउंडर. अच्छा ठीक है मैम. तो जितने भी फाउंडर्स हैं रूम में, इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को बहुत ज़्यादा. तो मुझे लगता है कि सब लोग इनको सुनते ही रहते हैं यूट्यूब पे, पॉडकास्ट पे, तो बहुत इंटरेक्टिव रखते हैं. आपको जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ बीच में हाथ उठा के पूछ लीजिएगा. तो सर बहुत ही आई विल स्टार्ट विद यू एंड देन आई विल गो टू मैम एंड आशीष एंड श्याम. बहुत सिंपल रखते हैं सर. जितने भी यहाँ फाउंडर्स बैठे हैं इनको एक ही चीज़ चाहिए, फंड रेस. मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी कुछ नहीं चाहिए, सबको फंड रेस चाहिए. तभी 3 VCs हमने लाके बैठाए हैं यहाँ पर. तो इनको फंड रेस करना है. तो अगर इनको फंड रेस करना है इस क्लाइमेट में, व्हाट शुड दे डू? See, so hi everyone, I'm Sandeep Agarwal, founder at Droom. So, while the business cycles come and go, there's always anything which goes up, come down, anything which goes down, go up. So those are the cycles. So first of all, if you are a founder, you need to understand that it will never be a straight line from here on. Welcome to the life of founder. So that is first thing I would say. Second thing, I would say that, while the founder, investors screen, their rigor of evaluating you will go up, will become tighter as the market becomes bad. But I would say 2-3 things. Your ability to articulate the future in a 4K or 8K, right? Cheaper, better, faster than others, always get the money, right? Pardon me, but has Elon Musk taken any one of you to Mars and brought it back? But he has articulated the multi-planetary living for human species, cheaper, faster, better than anyone else. He has articulated how an engine can be reusable. And if Earth has $100 trillion of mineral and metals, perhaps Mars has more than that. Right? And SpaceX is worth $100 billion plus, right? If I do a discounted cash flow, it may not be worth that much. But the option value of someone articulating that vision better than anyone else, in my view, is the beginning of the funding cycle for an entrepreneur. Right? So that is one thing I would say. And second is obviously from numbers to how, why you, why now, how. All those things sounds like nut and bolts and cliche, but they are always important, right? So sir, just to interrupt, आप बोल रहे हो एक articulation बहुत important है. Numbers, of course, vision and all of that. मैम आपके पास आ रहा हूँ. पैसा raise करना ज़रूरी क्यों है? अगर founders यहाँ room में हैं, why they have to raise money? क्यों raise क्यों करना है? They don't have to raise money. तो वो उस पे थोड़ा अगर हम clarity ला पाएं, आप तीनों से. हाँ. In fact, Ashish spoke about this, but earlier when I was in the lounge, somebody said, we have a lot of SMEs here. How do we make them scale? The question is, why do you want to scale? Right? You don't have to scale. First is, you are building this business for you. You may be ambitious like Elon Musk. He's happy man, not happy man, I don't know. I don't know him. So, whatever floats your boat, right? So all these questions. Earlier, today morning, somebody asked, I was telling Varun, who was speaking here earlier, ma'am, how long are you going to work? I don't know, yeah, because I don't know when I'm going to die. So I will work, right? So kya karna hai uske bina, right? So this wrong notions we are fed, we work for money. We do not work for money, okay? Any money is enough if you are happy and content within yourself. No money is enough if you're not content with yourself. But you're working for a sense of purpose and a sense of fulfillment. Each of us derive that from very different ways. One is not right, one is not wrong. The problem is, if you're raising money because you say, Arey, I saw Sandeep, somebody in a newspaper, मैं भी newspaper में मेरा नाम देखना चाहता हूँ, wrong reason, right?
So do you want to scale a business? It is, a monkey on your back. But if that's what you want to do, when you have investors, of course they have questions. They ask governance, they have this, they want you to scale, they want to make money, right? So you can't raise $100 million and then, I mean, we don't fund 100 million, but I'm just saying, but you don't bring hedge funds, PE funds, and then say, oh, they're making me grow. Then what do you think they were going to do, right? What was the logic? So I think that you don't have to raise money. You should raise money. At least I'll tell you as an entrepreneur what I did. In 2000, I sold my company. My board was telling me I can be a $5 billion company. I didn't understand how I can be a $5 billion company because I am born into a middle class family and the biggest gift I have is common sense. We had 40 million in revenue and everybody was saying I was a $5 billion company. We got an offer for 1.2 billion. I sold the business. 6 months later, everybody thought I was a genius. I was not. I was only having common sense. So if you take money, you have to think in the next 2 years, do I know on fundamentals how I can triple value of my business? If you don't take that money. So raise money when you know how you can put that money to good use to create growth, tremendous growth. If you don't know, then don't use that money or don't raise that money. Ma'am, very well said. But Shyam and Ashish open to both. ऐसा नहीं होता क्या VC का पैसा लेके घर गाड़ी खरीद सकते हो? ऐसा होता होगा, अलाउड होगा? नहीं, मैं सिंसियर क्वेश्चंस है मेरे, सिंसियर क्वेश्चंस है, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि शार्क टैंक है, अभी सब कुछ तो लोगों को खरीदना है. That's a little tricky if you did that. Yeah. No, because I am specifically asking this because we need to talk about these things more. Yeah. What is allowed and what is not allowed. What is not allowed, yeah. See, fundamentally, the capital that you get is money for growth. Yeah. Okay, I'm done. No, Hello. Go ahead. अरे आप ये लो. Hi, can you hear me? Okay, great. So basically this money is coming for growth. So you got to figure out what will help you grow. If it's people, that's what it's for. I mean, fundamentally it tends to be in tech businesses, it's mostly for people. And that people are meant to help you develop the product or develop your sales engine, develop your marketing engine. That's really what the money is there for. And like Vani just said, if you don't see a pathway to triple your business every couple of years, it's really not worth taking that VC money. Because then this monkey will never get off your back. That monkey will be on your back the entire time. So it's a dangerous thing to start taking that external equity. I mean, this is not debt, this is equity. You have the expectation of return on this is much, much higher. So you might think because you don't have to pay an annual interest, this is okay. It's not. It comes with a much higher end return expectation. So it better be worth your while to take this money. Now, nobody can tell you how to grow your business other than yourself. You will know. And you should decide what you need it for. Ideally, it is not meant for CapEx. It's not that you can't use it, but generally tends to be not too much for CapEx, but mostly for scaling up the other ways. But eventually, it's down to the founder to decide what they want it for. It's not for personal expenses, for sure. No, thanks, Shyam, for that. And Ashish, very different point. I meet a lot of founders. वो बोलते हैं कि हमारे पास आइडिया भी था, हमने रेवेन्यू भी कर लिया, VC ने हमको पैसा नहीं दिया. So how does VC evaluate a startup? What is the difference between a service startup and a product startup and a tech startup? वो अगर हम थोड़ा सा बात कर पाएं. It's a good question. Before I get into that, I'll just make a broad point. And in as much as it might not make me any popular for the question that you asked, I'll still want to say this. We have two sources of capital. And the two sources of capital we typically say is equity and debt. My definition is that one is third party. Equity, debt, both are third party. The other capital is what you get from your customers. What you said, the question had implicitly said that I have revenue and all that, and still the VC didn't give money. So be it. If your business is only going to do well, if you are going to remain into doing what you are doing by virtue of a VC validating it, the VC did a good job not giving the money. So I think it does, and it is true for us as well. We have, all of us are looking at raising money from somewhere else, and we might have a successful track record. Like a founder has got successful revenue and customer set. It does happen that we don't get money. There are enough investors who would meet us for
in our first fund, second fund, third fund, maybe come and turn around, give the money in the fourth. Right. That is life. I think persistence is the key factor in this. And once in a while, one should acknowledge the fact that there are a few things that didn't go right. Whether it was, I would take the point that was made earlier by Sandeep. One has to be able to do good what about the customer, the product, everything else, but the articulation also becomes important. Only articulation and no fundamentals ain't getting you anywhere either. So it's a combination of multiple factors. A hard introspection does get you there, and sometimes it's all about persistence. It does get you there. Sure, thanks. And I want to come back, Sandeep, on the founder side, because, it's great that the country is going through evolution and we are progressing, and, and a lot of these shows and a lot of these policies by the government have put the entrepreneurship on the main porch, right, which is great. But jitne bhi founders room mein baithe hain, kitne saal tak you should be okay to stay hungry literally and figuratively before you jump into doing a startup or entrepreneurship? People start, they leave it midway. How do you articulate early days of founder? Kya hunger, kya madness chahiye, kya obsession chahiye? See, entrepreneurship, in my view, is a real test of conviction, right? Right. I mean, when Wright brothers proved that there is something called plane which can fly, before that people probably found them crazy. They said only birds can fly, not the plane, right? When Thomas Edison said, I can have something other than a candle to create a light, right, or a natural light, people probably found him crazy. So one is, if you are, if you are removing friction in terms of something which has been previously done, and you are doing, let's say, you are doing the same thing cheaper, faster, and better, then I would call that as a disruption, right? And when there is something called Eureka movement, which something has not been done, I would call it innovation, although both can be interchangeably used. So when it is disruption, I feel, to answer Vaibhav's question, I think you have to be very careful about conviction versus being stubborn, right? If things are not working out, if you want validation from day one, you want TAM validation from two of your friends, you want something else, if everyone is validating a disruption, that's also not necessarily a good thing. But I guess, my feeling is anything you do, you should always, can you be the person who knows about it, how Ashish also mentioned, not just the storytelling, but the fundamentals. Can you know the nut and bolts of those things better than anyone else in the room, right? And after building 2 large companies, I also go through my own movement. I also have felt giving up a lot of times. But then I can tell you what keeps me going. If you always go for a large TAM, I know these are, in a boom market, they are more used and abused. But large TAM, it's very difficult to go wrong. If you are solving a problem where gross margin is very high, it is not easy to go wrong, because you can make lot of mistakes, but you will be forgiven. Third is, if the technology is center of what you are solving, then you create actual IP and moats, right? So my point is, but if you are working for 3-4 years, you were, let's say, category creator, or at least theoretically category creators, but you have reached nowhere. In my view, time has come for you to do the introspection, right? But if you are doing something pure innovation, something which has not been done, and you feel very passionate and you don't feel like giving it up, then I think you should go blazing all guns. There's no one right answer. If I'm a financial investor, I think I have maybe Vani and other of my fellow panelists will have a much more less emotional and more objective assessment of that. But I would say, yeah, I mean, if it is innovation, I'll probably stay longer. If it is disruption, I'll stay probably shorter. Because in disruption, if you are not proving that you can do cheaper, faster, better, then you are not going to achieve product market fit. So Thank you, Sandeep. Any questions? Yeah, please so go ahead. Vaibhav, can I just add something? This is, I think, a very important point you raised. And I'm probably the oldest of all these people here. And I've sat on both sides of the table. I think there is a dark underbelly to entrepreneurship nobody talks about. We come here, raise money, don't raise money, all that.
where is that, and it's very seductive, entrepreneurship has its own sort of siren call, so to speak, and the line of conviction versus gambling usually don't know where the slippery slope is, okay? The answer to Vaibhav's question, to me at least, is what is the price you are willing to pay? And the more you have thought about it, you know, in a grounded way, and put some boundary conditions, because at the end of the day, we are all human and we have emotions. Whether you're an investor or whether you're entrepreneur, doesn't matter. Everybody carries their emotional whatever on within them. But I have seen so many entrepreneurs lose sight of the price they are going to pay, right? By not making certain hard decisions. And sometimes I can tell you, as an investor or even as an advisor, it's very hard. You can try to paint the picture, try to stop them, but you can't do anything because that's their choice, it's their company. So I'm not trying to say give up, but you have to know where is that line. And way too many times, and I'll tell you one instance which I always think about to say, could we have done anything different? One founder we had in our portfolio had mortgaged his 80-year-old mother's house without her knowledge, or maybe with her half knowledge, and put that into the company. We don't know that. We are investors. We don't know from where you are getting the money, what you are doing. And the company tanked, right? And there was nothing else for his mother, right? Now, is that a risk you should take? Now, of course, if this became a billion-dollar company, you may applaud it. But is that a risk you should have taken? That's the answer only you can answer. I don't know whether you should keep going. It's technology, it's innovation. You did put a person on Mars. So what if you mortgage your mother's house? I don't know, right? But this is not a question to be answered in any way other than sit and meditate, okay? For 5 minutes, think about the risks you're taking and whether you're willing to pay that price or not. But that slope of when it goes from conviction to gambling, most founders don't recognize it. So sorry, I wanted to put that point across, exactly. Okay? This is what I wanted to bring out. And one last question, because ma'am is like late हो गया है, तो एक जल्दी से बोलिए आप. ऐसी पूछ लो यार. Sajid sir and Karthik sir, they have been talking about people entering the VC space. I, being a B school graduate, you know, have an aspirations to enter there. So what would the VC ecosystem develop in the tier 2 arena? I think you did refer to the fact that it's an ecosystem, and ecosystems are going to be in certain parts. It is going to be incredibly hard and long for ecosystems to come up at different places, wherever they are, whether it is a Bangalore, Delhi, or a few other cities. You can see the difference. Bangalore ranks number 1, 2, 3, 4, 5. Maybe everything else is number 6, 7, and 8. So it is not something where one can change things overnight. Whenever we do look at people who are looking at getting into this ecosystem, we always say, be out there where the ecosystem is and then come back and do whatever you want. So one has to take that hard call. You say, how much heavy lifting I can do? Yeah, it's a valid question. But fact is that there were enough who heavy lifted bringing services to India. There were enough who brought customers to India. And we are sitting where we are at today. So it has to be thought about it grounds up, and there are no easy answers for it. Sham has to add something and then we wrap up. One point on this, if you use... Hello. Something happens. It doesn't like me. No. So if you take the Nagpur ecosystem, I'm saying this as somebody who studied here, right, in college. So there is a lot of things you got going for it, and there are some things that may not sit that well. But the fact that you have a very strong industrial hub, so start with the strengths of the region, right? Very strong industrial hub, very strong mining hub, very strong foundries, very strong defense-related industries, very strong industrial explosives, all of those kind of industries. There's a lot of inherent strength, a lot of trading companies. So startups that can create products and services that leverage that, right? That make that ecosystem stronger and can then take it to the rest of the country and rest of the world are automatic touch points that Vidarbha has.
Because that is the strength of Vidarbha. I mean, this is the area where it's our industrial heartland, right? So you've got to leverage that, right? Leverage the trading houses, leverage agri commodities, leverage mining. These are very strong industries where a Bangalore-based founder may or may not have any advantage over you. You are much closer to those end customers here. So you may actually be able to create a product that is far better suited for those industries coming from Vidarbha versus coming from Bangalore. So leverage your strengths in the region, build products that can scale across the country and the world, and then start. I mean, so your natural advantage play to that strength. Vidarbha has a lot of strengths, so this is what you should play to. Thank you so. Thank you so much, all the speakers, and thank you so much, Weber, for moderation, and Jayji. I request volunteers to please. I request Mr. Shashikant Chaudhary to please present the token of gratitude to Mr. Shyam Menon, to Mr. Ashish Fafadia, to Mr. Sandeep Agrawal, to Mr. Vaibhav Vardhan, and I would request one quick group photo with all the speakers and Shashi sir. One quick group photo. Yeah. Yeah. So one quick photo. Thank you so much. Moving to next track. Moving to next track. Panel discussion on strategic investing in tomorrow, capitalizing on emerging trends. So we have a speaker, Mr. Anil Joshi from Unicorn Ventures, Mr. Amit Singhal from Fluid Ventures, Dr. Apurva Ranjan Sharma, co-founder and venture catalyst and Nine Unicorn, and moderated by session. Are there anything? And session moderated by Mr. Jitendra Vijay, Meti Startup Hub. I request all the speakers to please join the dais. I request Mr. Anil Joshi, Mr. Amit Singhal, Dr. Apurva Sharma, and Mr. Jitendra Vijay to please join the dais. I request anyone from INFED or GH Raisoni to please help me out here. Hello. Hey.
चाहे इंडिया वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे इंडियंस ही इंडिया ज्वेलरी बाय कर रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, यूएस हो। इंडियन ज्वेलरी के आउटलेट्स बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। सो मेरी ये सोच है कि आने वाले सेमिनार, ये जो सेमिनार पूरा होगा तब तक हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में और ज्ञान दे सकें और जीजेसी आपका एक बराबर मेंटर बन के सोच के अंदर आगे बढ़ते हुए आपको इसके अंदर ज्ञान देता जाए। ओवर टू यू। हाँ, सो जैसे आपने अभी सुना कि इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म हमको है यहाँ पे आपके विदर्भ के लिए। आज की स्पीच भी बहुत इंस्पायरिंग थी और नितिन गडकरी जी ने कहा था कि भाई यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ के यूथ में मैं एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उनको मैं बिजनेस ओनर्स की तरह देखना चाहता हूँ, वैसा उनका मानस चाहता हूँ। तो मैं ये मतलब राजेश जी से पूछना चाहूँगा कि उनका विदर्भ के यूथ के प्रति, और जैसे कि वो जेन नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इतना उत्सुक रहते हैं कि लोग जुड़ें और यहाँ पे कैसे बडिंग ज्वेलर्स बने, लोग अपने आप को अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी एक बिजनेस ओनर की तरह देख सकें, तो थोड़ा उस रूप से थोड़ा जरा आप इस बारे में जानकारी दीजिए। थैंक यू। हेलो, थैंक यू साहिल भाई। थैंक यू साहिल भाई। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एडवांटेज विदर्भ क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है और शायद ये जो पहल हमारे लाडले खासदार गडकरी साहब ने की उसके पीछे मंशा क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरे देश में अलग अलग जगह से कई खासदार होते हैं, बट नागपुर में जो खासदार महोत्सव होते हैं और इसके पहले जो 2 खासदार महोत्सव ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि एक खासदार महोत्सव है सांस्कृतिक खासदार महोत्सव और बाद में एक क्रीड़ा खासदार महोत्सव शुरू हुआ। मतलब यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देना, यहाँ के खिलाड़ी जो है उनको बढ़ावा देना, ये दोनों के बाद यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ का उद्योग बढ़े और सबसे बड़ी बात, अगर व्यापार और उद्योग बढ़ता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे रोजगार भी बढ़ता है। तो ये मंशा रखते हुए हमारे लाडले खासदार ने ये शुरुआत की और जब नॉर्मली मैं देखता हूँ कई संगठन बनते हैं, व्यापारी लोग इकट्ठा आते हैं या और भी कोई लोग इकट्ठा आते हैं, एक संगठित होते हैं, संगठन बनाते हैं, संगठन को रजिस्टर करते हैं और फिर वो किसी एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं और फिर वो एज अ ब्रिज करके ऑलवेज काम करने की कोशिश करते हैं, सरकार के साथ बातचीत करते हैं, सरकार को उस अपने इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे, प्रमोट करे, प्रोग्रेस करने के लिए वो कोशिश करते हैं। ऐसे कई अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहते हैं, बट केवल एडवांटेज विदर्भ ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद मंत्री महोदय ने तैयार किया है और उनके तरफ से यह पहला कदम आगे बढ़ा है कि व्यापारियों के हित में, व्यापारियों का रोजगार बढ़ने के लिए, व्यापारियों को अपॉर्चुनिटी बढ़ने के लिए। और मुझे लगता है देश में एकमात्र मंत्री जिनको मैंने देखा है कि जो ऑलवेज व्यापारियों के हित में बात करते हैं। मुझे आज भी याद है, अगर आप लोग यूट्यूब पे जाइए और एक जस्ट सर्च करिए आप, बरखा दत्त के साथ उनका एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में गडकरी साहब को उन्होंने पूछा था कि भाई बड़े बड़े लोग घोटाले करते हैं और देश के बाहर चले जाते हैं, तो उन्होंने इतने क्लेवरली नहीं, मैं बोलता हूँ कि उन्होंने व्यापारी क्यों देश के बाहर जाता है उसके ऊपर उन्होंने एक अपना अलग एंगल रखा और वो एंगल शायद किसी और ने आज तक के नहीं रखा। नॉर्मली कई बार देखता हूँ कोई देश छोड़ के जाता है तो कि अपना घर छोड़ के जाना इतनी ईजी बात नहीं है। जो कभी एक ज़माने में बहुत बड़ा रहा है वो कभी अगर अपने मट्टी को छोड़ के जाता है तो उससे पेनफुल कुछ नहीं है। तो बरखा दत्त के उस प्रश्न पे उन्होंने ये कहा कि जब वो आदमी आपके लिए एडवर्टाइज देता था, जब वो आदमी आपके लिए प्रोग्राम देता था, तो एक छोटा सा बर्ड आप करोड़ों रुपए पे गिरवी रखते थे और थोड़ा सा बिजनेस अगर 19-20 हो जाता है तो उस समय में उसको एज अ सलाइन, एज अ उसको ब्लड मिलना चाहिए, उसको सलाइन मिलना चाहिए, उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए, उसको दवाई मिलनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में आप उसके सभी बैंक अकाउंट को क्लोज सीज कर देते, तो व्यापार कैसे करेगा? तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर अप एंड डाउन होता है, कभी बिजनेस नीचे ऊपर होता है, तो उस समय में मीडिया बोलिए या सरकार के तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो फिर से स्टार्टअप कर सके। अभी एक पिक्चर देखा मैंने 12th फेल, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जरूर देखिए। वो 12th फेल में उन्होंने एक सब्सिडी का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और उस उदाहरण में बताया उन्होंने कि कई बार आप विफल हो से हो लेकिन एक ना एक दिन सफल तो जरूर हो गए आप। मैंने शुरुआत की, मुझे जैसे कि साहिल भाई ने अभी बताया, मैं 100-150 स्क्वायर फुट के शोरूम से हमने अपनी शुरुआत की। सबको देखते देखते, लोगों से सीखते सीखते, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैंने सीखा है। यहाँ सामने बैठे उसमें भी मेरे कई लोग ऐसे जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो सीखना तो निरंतर प्रक्रिया है ज़िंदगी की, वो सीखते रहना पड़ेगा और निश्चित तौर पे
सफलता आपके कदमों को चूमने के लिए रेडी है, बस आप हिम्मत मत हारिए। तो अगर आप 12th फेल पिक्चर देखेंगे तो रिस्टार्ट करना उसमें सिखाया है। आप कभी अगर वो बोलते हैं ना सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, तो सबसे ऊपर में जब वो 98-97 पे एक सांप काटता है और सीधा आके 1 या 2 पे आके हम लोग नीचे बैठ जाते हैं, फिर हम लोग हिम्मत हार देते। तो कभी भी गिव अप मत करिए। आप ये कभी मत सोचिए कि अभी मैं कर नहीं पाऊंगा, आप कर पाओगे, बस आप हिम्मत मत हारिए। अपॉर्चुनिटी का भंडार है हिंदुस्तान, और उसमें भी विदर्भ की बात ही कुछ अलग है। विदर्भ तो एकमात्र, मैं मतलब आज के भाषण में मैंने मुंगटीवार साहब ने कहा है, शायद मुंगटीवार साहब ने कहा इस चीज़ को, कि बोले सिर्फ 2 चीज़ छोड़ दिया जाए तो हर चीज़ विदर्भ में, एक तो बोले बर्फ़ नहीं मिलेगा, पहाड़, बर्फ़ के पहाड़, और दूसरा समुंदर। ये 2 चीज़ छोड़ दी जाए तो 98 चीज़ें, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। खनिज अवेलेबल है, जंगल अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है, एनवायरनमेंट अवेलेबल है, जो चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास भंडार है। और सबसे खास बात, अगर आप आज वर्ल्ड में इंडिया को एक उपभोक्ता के तहत देखा जाता है, आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई चीज़ देखा जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है भारत को, क्योंकि यहाँ एक जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ कंजम्पशन बहुत है, और कंजम्पशन अगर ज़्यादा है इसका मतलब प्रोडक्शन की ज़रूरत है। ऐसे केस में क्या होता है, जब भी कभी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आपको उपभोक्ता, आपको मार्केट की अवेलेबिलिटी देखनी होती। तो अब रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है हमारे पास, हमको सिर्फ और कुछ नहीं करना है, हमको अपनी सोच को बदलना है, और जो हम माइलस्टोन या बेंचमार्क तैयार करते हैं वो ऐसा करना चाहिए कि पूरे दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए। और रही बात साहिल भाई, आपके सवाल पे भी मैं आता हूँ। आपने कहा कि नए लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और कहावत भी है, अगर बाप से बेटा सवाई नहीं निकला। मैं बाप बेटे की बात इसलिए करता हूँ कि नई जनरेशन जब आती है, कभी भी बाप को अच्छा लगता है जब बेटा उससे अच्छा कोई करता है तो, और ये धरोहर है, ये हर बाप अपने बेटे को देना चाहता है, अपने भतीजों को देना चाहता है। और मैं तो यहाँ बैठे हुए नितिन भाई की हर बात, एक बात से सहमत करता हूँ, लीडर वो नहीं है जो लीडर बन के सिर्फ मैं हूँ, लीडर वो है जो नए लीडर बनाता है। तो आज हमारे पास ऐसे कई युवा चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में हमारे चमकते हुए सितारे बन सकते हैं, और शायद अपॉर्चुनिटी का भंडार है विदर्भ। और मूलतः एडवांटेज विदर्भ में यहाँ का उद्योग बढ़े, यहाँ का व्यापार बढ़े और यहाँ का रोजगार बढ़े, इसके ऊपर जो शुरुआत की है वो शुरुआत ही है। ये पहला साल है, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज का आयोजन और लोगों को देखा, और यहाँ की सरकार ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, खुद एमएसएमई मिनिस्टर यहाँ पे थे, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे थे, मतलब पूरी तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है। और शायद आज के भाषण में गडकरी साहब ने 2 सपने पे बात की है, वो 2 सपने हमें साकार करने हैं। और वो हमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई अकेला उसका हकदार भी नहीं है, क्योंकि विदर्भ में किसी एक की बपोती नहीं है, मैं बोल सकता हूँ सब हमारी सबकी बपोती है, ये यहाँ के लोगों की है। और इसके साथ साथ उनके जो 2 सपने, एक गोल्ड क्लस्टर बनना और एक गोल्ड सुक मार्केट बनना, तो ये सपना हमें सब मिलके साकार करना है। अभी थोड़ी देर पहले संयम भाई ने कहा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से होलसेलर्स हैं, मैं उन्हें भी ये कहूँगा कि आज मुंबई पकड़ लीजिए। आज मुंबई में इतने होलसेलर्स है, इतने मैन्युफैक्चरर है, लेकिन फिर भी मुंबई में व्यापार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो अगर कहीं किसी को ये लगता है कि शायद बाहर से कोई व्यापार करने के लिए अगर यहाँ आता है तो नागपुर का नुकसान होगा, बिल्कुल सरासर गलत है। हम उल्टा और अपडेट होंगे। जिस तरीके से रिटेल में अभी देखिए कितने कॉरपोरेट है, अलग अलग साउथ से भी आए हुए, मुंबई से आए हैं, पुणे से आए हैं, उससे नागपुर का व्यापार कम नहीं हुआ है, उल्टा मार्केट डेवलप हुआ है, एक अनुशासन के तहत चला है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। और यहाँ के होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर जो है, जो अभी अपने आप को सीमित रखते हैं, मैं उनसे तहे दिल से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए। और आने वाले दिनों में आप भी, आज के तारीख में जैसे नागपुर में सोलार है, बैद्यनाथ है, मतलब लंबी लिस्ट है, जितने मैं नाम लूँ उतने कम है। 100 से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो नागपुर से काम करते करते पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही उनका नाम होना चाहिए। इसके लिए मतलब जितनी मैं सोचूं उतनी अभी आशाएं हैं, उनसे अपेक्षाएं हैं, बहुत कुछ है। बस कमर कसिए और आगे बढ़िए, यही कहूँगा साहिल भाई। बहुत बढ़िया राजेश भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री प्रदीप कोठारी जी से, आपके यहाँ के एकदम नामी ज्वेलर और मतलब लीडिंग ज्वेलर हैं, कि आके अपना स्थान ग्रहण करें नितिन खंडेलवाल जी के बाजू में।
और अभी मेरा सवाल है आशीष जी से, जिन्होंने विदर्भ में एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और हॉलमार्क के बारे में उन्होंने पूरा स्पेयरहेड किया था। ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए विदर्भ रीजन के लिए किस टाइप का ग्रोथ समझते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए? गुड इवनिंग, आवाज़ आ रहा है? गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। अभी हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में विदर्भ के बारे में बहुत सारी बातें कही है, तो विदर्भ के बारे में मैं और क्या कहूँगा। आई थिंक विदर्भ का वी इज़ फॉर वाइब्रेंसी। हम लोग पिछले 15 सालों से विदर्भ में हैं और एवरी ईयर मैं देख रहा हूँ कि विदर्भ एज अ मार्केट और विदर्भ एज एन एरिया इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डेवलप्ड। वाइब्रेंसी एक आ गई है और एक अलग रीत का कॉन्फिडेंस विदर्भ में दिखता है मुझे, कि आगे बढ़ने का, बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस विदर्भ में बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे अभी 2 शोरूम्स हैं और होपफुली आने वाले 2 सालों में और 2 शोरूम्स हो जाएंगी। और हॉलमार्किंग का आपने कहा, हॉलमार्किंग के लिए जो लड़ाई थी, नितिन भाई को मालूम होगा, तो वो लड़ाई की शुरुआत भी विदर्भ से हुई थी। और मैं हॉलमार्किंग की लड़ाई में लगभग 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ओरिजिनली 2000 में जब हॉलमार्किंग शुरू हुआ था, तब से ये स्ट्रगल हुआ है सबका, क्योंकि BIS ने ये हॉलमार्किंग का लॉ पूरा UK का जो हॉलमार्किंग है उसके ऊपर से सीधा कॉपी पेस्ट करके लाया था। इसके लिए हमें थोड़ा झगड़ा करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो हमें झगड़ा करके करवाना पड़ा। वो स्टार्ट हुआ था रिटेल से लेके अभी वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे गया है। और मेरे हिसाब से स्ट्रगल अभी थोड़ा ही बचा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे एडवाइजरी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी में हमने मिनिस्ट्री में जाके, BIS में जाके बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। लेकिन आगे एक नया फ्रंट खुलने वाला है, वो भी कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ बुलियन, ये अंडर कंसिडरेशन है। ये हमें सबको सीरियसली इसको सोचना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के अगर ये सही रीत से नहीं हुआ तो हम सबको, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सबको तकलीफ़ हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ऑडियो ओके आशीष जी, जैसे हम बोलते हैं कि लीडर को संघर्ष करना पड़ता है, हमारे बीच में एक लीडर जो जब चेयरमैन थे तभी भी संघर्ष कर रहे थे, उससे पहले भी इंडस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे थे। PMLA में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। और एक नई चीज़ जो आपके विदर्भ में बहुत एक वर्ड अभी हमको सुनने को मिल रहा है, गोल्ड सूक और विदर्भ, उसका क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा नितिन खंडेलवाल जी, आप ज़रा ये सब चीज़ जो आपसे 2-3 चीज़ें बताई हैं इसके बारे में थोड़ी दृष्टि करें। सब धन्यवाद साहिल। पर जैसा अभी तुमने बोला था कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है शुरू में करके, मैं डिटेल तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। जो सब्जेक्ट है वो मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब कवर कर ली है। केवल थोड़े आशीष जी बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं बताने में, मैं उसको बता दूंगा कि हॉलमार्क के अंदर पिछले 3 दिन से हमारी कंटिन्यूस मीटिंग चालू है। आप लोगों को ये सुनना समझना बहुत ज़रूरी है कि हॉलमार्किंग तो आई गया, सक्सेसफुल है। हम तो 15 साल से हॉलमार्क बेच ही रहे, हमारे समय काफ़ी लोग। लेकिन बुलियन पे हॉलमार्किंग जो मैंडेटरी आ रही है उसका ड्राफ्ट भी उन्होंने बना लिया है। और ड्राफ्ट का कुछ जो चीज़ें थी वो केवल GJC को उन्होंने भिजवाई, सारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, और उस पर लिखा है कि कॉन्फिडेंशियल है, डोंट फॉरवर्ड इट, और हमको डिस्कशन के लिए दिया। हमने राका जी के साथ में मीटिंग करा और उसमें जो ड्राफ्ट है उसके अंदर काफ़ी चीज़ों की स्मेल अलग अलग आ रही है। सबसे पहले जो मैंने कल मीटिंग के अंदर बोला परसों कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है गवर्नमेंट की या ब्यूरोक्रेट्स की। उसमें जो सिस्टम आएगा उसमें हमारे को जो पहले बात थी कि हम रिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, इसके अंदर हम आज तक सुनते आ रहे थे कि जो भी पॉलिसी बनती है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के बनती है और उसके अंदर छोटे ज्वेलर्स हो या किराने वाले हो या दूसरे ज्वेलर्स, छोटे लोग मरते हैं उसके अंदर। इस बार ये रियलाइज़ भी हो रहा है पिछले 4-5 साल में कि पॉलिसी उस लेवल की बन रही है जिसमें केवल कारपोरेट ही जिंदा रह सके और आम आदमी, मीडियम या 2-4 शोरूम वाला या फैमिली ओन वाला चला ही नहीं सके।
उस हिसाब से सारा ड्राफ्टिंग होगा। उसके एक एग्जांपल दूं तो रिफाइन करने के लिए जो NIBR एक्रेडिट लेवल की जो रिफाइनरी है, NIBR उस LBMA समझ लो ना, लंदन मेटल एक्सचेंज की जो है, उस लेवल की अगर रिफाइनरी हो तो ही रिफाइन कर सकते। अपन जो अभी लोकल में सोना दे देते, रिफाइन करके ले लेते, काम में ले लेते, वो अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं होगा। मतलब आपको, और यहाँ तक कि उन्होंने कर लिया है, होल मार्किंग के कुछ जो एसोसिएशन के लोग हैं और जो रिफाइनर्स के लोग हैं, उन्होंने, मेरा खुला आरोप है, उन्होंने काफ़ी लोगों को पैसे का लेन देन कर लिया और हमारे लोगों को, और ये कोशिश कर ली अभी तक के पूरी कि हमारा पूरा जो सोना ओल्ड गोल्ड जमा होता है वो हमको हर बार बम्बई या दिल्ली या नागपुर, जहाँ पे भी रिफाइन होंगे, अभी नागपुर में भी नहीं है, वहाँ भेजना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा। 1 रुपया ग्राम में तो आना जाना हो जाएगा, 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। हम आपका सोना थोड़ी रिफाइन करेंगे, आपके टंच के बदले में दे देंगे। ये पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। उसके लिए सबसे ज़्यादा साहिल, यू शुड बी थैंकफुल टू विदर्भ कि हमने कोर्ट के अंदर होल मार्किंग के अगेंस्ट में सबसे पहला स्टे लेकर आए, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए और गवर्नमेंट के पास से जाके, और उसको जो राजेश रोकड़े ने वो फाइल किया, मैं चाहता हूँ एक बार तालियां से उसका स्वागत किया जाए कि उसने डेयरिंग करी, और ये हमारा डिसीजन था, चेयरमैन ने परमिशन दी थी। तो जब तक के GJC इसके अंदर एक्टिव है, ऐसा कोई कायदा होने नहीं देंगे। वो बन चुका है कायदा, उसका ड्राफ्ट है हमारे पास में, लेकिन हम उसके लिए कैसे फेजेस में लड़ाई लड़ना, पीयूष गोयल जी को अप्रोच करना, हमने PM को तकात लेटर उसके अंदर भेज दिया ना, हमारा लेटर ड्राफ्ट हो चुका है। हम PM को भी इंटरवीन कर रहे हैं। हम पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है वो ही चले, आंसरेबिलिटी आना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर राज और गोल्ड कंट्रोल एक्ट और छोटे छोटे चीज़ों में गोल्ड गया कहाँ, आया कहाँ, निकला कहाँ, ये सारे चीज़ों में हम नहीं अटकना चाहेंगे, न हमारे ज्वेलर्स को अटकाएंगे। थैंक यू। ये राजेश जी का जो आपके लिए मैं एक मिनट आपके चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा। मैं हर लाभम में ये मेंशन कभी भी करना भूलता नहीं कि राजेश जी ने एफर्ट किया विद GJC से, और ये जो स्टे लाए, इसकी वजह से आज हम सारे ज्वेलर्स आराम से सो सकते हैं। क्योंकि पहले तो रूल ये था कि आपकी दुकान, आपका नाम सब बंद हो सकता है, कुछ भी बिना, मतलब इतना ज़्यादा डॉक्ट्रिनेरियन रूल था कि आप भूल जाओ व्यापार करना, ऐसा हो गया था। राजेश जी प्लीज। थैंक यू। ये सब आप लोग का सहयोग होता है, इस वजह से कर पाता हूँ, और बिना सहयोग से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे को स्पेशली अभी जो नितिन भाई ने बात रखी, उसमें स्पेशली मेरा जो सबसे पुराना दुकान है वो गलाई लाइन में है, और वहाँ मेरे आजू बाजू कम से कम 10 से 12 गलाई की दुकानें हैं। मैं अभी यहाँ पे कुछ मेरे गलाई वाले दोस्त भी यहाँ बैठे हुए हैं जो गलाई का पहले काम करते थे, अभी रिफाइनरी का भी काम करते हैं, वो अभी लेन देन का मतलब ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। उसमें स्पेशली मैं रोशन, सुभाष जी, अतुल और नंदू गर्जे जी वहाँ सामने दिख रहे हैं मुझे। तो मेरा आपके एसोसिएशन को, आपके माध्यम से आप ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर ये चिंगारी अभी आपने नहीं भड़काई और आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो फिर मुश्किल जाएगा। आप बिल्कुल कोशिश करिए। आप, मुझे लगता है आपके जो प्रेसिडेंट है उनसे ज़रूर बात करिए, क्योंकि ये एक प्रकार से जिस तरीके से ये कानून आ रहा है उसमें छोटे छोटे जितने भी रिफाइनरी है वो शायद उनको मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो आप लोग इसका ज़्यादा ध्यान दीजिए। मतलब जैसे नितिन भाई ने कहा, इसमें जो कॉरपोरेट तरीके से जो काम करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा, वो लोग किसी न किसी हालत से अपने आप को सेव कर ही लेंगे। बट रियल में जो रिफाइनरी छोटे पैमाने पे करते हैं, आधा किलो 1 किलो तक के, उनको सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। आप अपने प्रेसिडेंट से ज़रूर इस संदर्भ में बात करिए, क्योंकि अभी सिर्फ SOPs फॉर्म होने की तैयारी है। जिस दिन अगर आ गई तो आपको व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा एक इशारा है आपको, उस इशारा को समझिए। अभी चर्चा को थोड़ा और डिफरेंट लेके जाते हैं। प्रदीप जी से मेरी अभी तक ज्वेलरी के विषय में 2-2 घंटे की 2 बार ही मुलाकात हुई है, लेकिन जितनी बार भी मुलाकात हुई है मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है। जिस सूक्ष्मता से ये ज्वेलरी परचेज, ज्वेलरी डिज़ाइन, कस्टमर चॉइस, कस्टमर के साथ मतलब HR सिस्टम, स्टाफ सिस्टम जो ये मेंटेन करते हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम शोरूम इंडिया लेवल पे मेंटेन करते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमको इनसे। मैं इनसे चाहूँगा समझना, एक ये आगे आने वाले व्यापार को किस तरीके से देखते हैं, उसमें ग्रोथ का क्या समझ दे सकते हैं कि आगे ग्रोथ कैसा रहेगा, और व्यापार में आपका
एक विदर्भ का ग्रोथ और आपके कस्टमर्स के लिए बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं कि कस्टमर आपके इधर बार बार अट्रैक्ट होता है, तो ये थोड़ी चीज़ों पे थोड़ा बताइए हमको। धन्यवाद संयम जी। और जैसा विदर्भ एडवांटेज ये पहला है प्लेटफॉर्म फॉर ज्वेलरी, जिसमें ज्वेलरी को एक प्रॉपरली हमको एक विदर्भ के लिए सोचने के लिए मिल रहा है। आभूषणम साथ में जीजेसी ने जोड़ा है, तो बट नेचुरल है कि यहाँ पे और अपन बेटर क्या कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो उससे शायद आपकी हिम्मत बढ़े। और हमारे पास में तो यंत्रणा है, उस समय मेरे पास यंत्रणा कुछ नहीं थी। 2012 में मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि हीरा सूरत में क्यों, नागपुर में क्यों नहीं। तो मैंने काफ़ी डीप स्टडी किया, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, आप अपनी इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री के बारे में आप एक रोड मैप बनाइए, अपने क्या क्या वर्टिकल है। कोयम्बतूर में बनता है, बेंगलोर में बनता है, बॉम्बे में बनता है, दिल्ली में बनता है, कलकत्ता में बनता है, बनता सब जगह है, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह का एक एटमॉस्फेयर बनता है। हमने गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई हीरा जब इंपोर्ट होता है तो हीरा दो तरीके से होता है। एक साइट होल्डर होता है जो वर्ल्ड में 52 साइट होल्डर है, जिसमें से 42 इंडिया में है, और एक होता है जो रशियन माइंस होती है, जो रशियन आज सबसे बेस्ट माइन है अल रोज़ा करके है, और वो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड होता है। तो हम गए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया, मैं नितिन भैया हम लोगों ने 5 जने इंडिया से 5 जने मिलके गवर्नमेंट को लेटर दिया। तो उसमें एक वर्डिंग था कि इस चीज़ को करने के लिए आपको इतना हज़ार का टर्नओवर चाहिए, इतनी चीज़ों का आपका ट्रेड वो होना चाहिए, इतना आपके बैंक ये हो कैपिटल होनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई इस चीज़ में भाई हम भी वहाँ पे कर सकते हैं, और हमने एक प्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है नितिन भैया हम लोग करीबन 2 साल तक के हमने कंटिन्यूज, मतलब वर्ल्ड के केवल 51 मेंबर वहाँ पे एलिजिबल थे, जिसमें से 5 इंडियन थे, और 5 इंडियन में से 3 इंडियन हम लोग थे। तो ये 3-4 साल तक के हमने नॉन स्टॉप रफ डायमंड हमें मिलता था, हम यहाँ पे बुला के सोइंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब आधा सेंट से लेके तो 10 कैरेट तक के हीरा हमने खुद मैन्युफैक्चर किया नागपुर में बैठ के। रशिया भी रहते। और आप ये देखेंगे उसमें अल रोज़ा का उस समय में जो माल आता है और आज भी जो माल आता है, कोई भी ट्रेडर भैया ये सील पैक अल रोज़ा का माल है, तुम प्रीमियम बोल कितना देता है, ले लेते हैं हम तेरे से, कोई भी आज भी। तो अल रोज़ा की साइट वर्ल्ड में बहुत रिनाउंड है, वो हमने वहाँ से लेके हम LPTM रजिस्टर्ड किया। उसके बाद में मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने आपने सुना होगा रशिया के साथ में एक $8 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया था। वो ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था, पर शुरुआत हम लोग जो विदर्भ के 4 जने थे, उन्होंने वो शुरुआत 2012 में कर ली थी, जबकि गवर्नमेंट उस समय न कि हमारी महाराष्ट्र में बेटर थी और ना सेंट्रल में थी, MMTC के साथ में। तो ये वर्किंग जो होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए हमारे पास में सोर्स है, जो हमारे को यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हम बिजनेस कर सकते हैं। और मुझे तो ना पॉलिशिंग का नॉलेज था, न मुझे कैसे इंपोर्ट होता है, न मैंने रफ की चीज़ है, पर हर चीज़ जब हम सीखने जाते हैं तो एक के बाद एक, और हमने नॉन स्टॉप हमने 4 साल तक के हर महीना उनकी साइट होती थी। और साइट में मतलब साइट बोले तो वर्ल्ड में हमारे लिए एक प्राउड फील होता था कि हमको साइट मिली है, चलो जाके बाय करो। तो और साथ में हमने सूरत के मैन्युफैक्चर से लेके यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया, और एक छोटा सा कारखाना लगा के हमने यहाँ पे सोइंग से लेके
पॉलिशिंग से लेके कटिंग, एशॉर्टमेंट, बॉइलिंग, पूरा यूनिट हमने यहाँ पे किया है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सेम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की है। जैसे मैंने राजेश जी से कहा कि भाई ज्वेलरी का जो बाय प्रोडक्ट है वो है बुलियन, और बुलियन का सप्लाई, बुलियन का जो रिसोर्सेस है वो हमारे यहाँ पे मिलेगा, तो हर घर घर कारीगर अपनी जो क्राफ्टमैनशिप है वो अच्छे से हो सकता है। क्योंकि सस्ता बुलियन और सस्ते में मिलना, आज 2.5% में बुलियन मिलता है, 2.5% में वो क्यों बॉम्बे वाले और को हम यहाँ लाए, सॉरी संयम जी हम लोग यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें हमने कमेटी में जो बनाई है उसमें रखी है कि एसएफटी जो रहता है, कॉमन फैसिलिटेट सेंटर, जिसमें लड्डा जी और ये लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं अलग अलग प्लास्टिक, तो हमारे इसमें भी जो मैंने टर्की में देखा है, टर्की में मैंने देखा है, यह एक 5 मिनट में लूँगा, एक छोटा सा कारीगर है या छोटा सा वर्कशॉप है, डिज़ाइनर है, शुरुआत पे आता स्केच डिज़ाइन, फिर कैट डिज़ाइन, फिर कास्टिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, और ऐसे लाइन से दुकानें हैं। मतलब वो बंदे को ऐसा आया कि सुबह में गया, अपना 100 ग्राम सोना लाया उसने, फटाफट रात को पॉलिश करके लेके चले गया। तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं कि पहले तार निकलता था, डाई कटती थी, फिर जोड़ होता था, पॉलिश कटिंग और होती थी, तो वो जो था वो अलग अलग लोगों के यहाँ जाना पड़ता था और 48 घंटे में प्रोडक्शन आ जाता था। तो उसी तरीके से ये 48 नहीं, ये 8 घंटे में प्रोडक्शन आ जाता है। तो ये कॉमन फैसिलिटेट सेंटर हैं। जो हमारे यहाँ की जो रीजनल डिज़ाइनें हैं, हम कितना भी बॉम्बे से ला लें, पर आज भी रीजनल डिज़ाइनें रीजनल है, हम उनको कम करते जा रहे हैं। हमारा काम है हम हमारे जो रीजनल डिज़ाइन है वापस उसको लाए, क्योंकि हम कहीं भी वो बना ले, जो रीजनल कलाकार है वो बाहर नहीं बन सकता। तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ रिटेल हूँ और मैंने सब मैन्युफैक्चरिंग करी है। तो उस कारण से मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है और जो टीम बनी है बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि व्हाट वी सेव व्हाट वी अर्न, हमारे लिए आधा % भी सेव होगा तो हम मार्केट में बड़े बड़े कॉरपोरेट से और हम हमारे कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और हमारा कंपटीशन ऐसा है कि वो कॉरपोरेट वाला हमारे यहाँ से लेके जाए, वैसे प्रोडक्ट हम बनाएं, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। जैसे कि हमारा लाभम का उद्देश्य क्या रहता है कि हर जगह, हर शहर में, जैसे हर नुक्कड़ पे एक प्रोविजन स्टोर होता है, मतलब किराने की दुकान होती है, तो हर नुक्कड़ पे एक ज्वेलर होना ही चाहिए। इनफैक्ट पूरी गली में 4-5 ज्वेलर होने चाहिए। और जब तक ये कल्चर रहेगा कि छोटे ज्वेलर एग्जिस्ट करेंगे, ये कल्चर तभी तक रहेगा ज्वेलरी खरीदने का, क्योंकि ये एक कॉमन थ्रेड है, बेचने वाले लेने वाले एक कल्चर में हो जाता है। अगर ये सपोज ये छोटे ज्वेलर्स अगर सपोज नहीं प्रोग्रेस कर पाया और उनका काम नहीं चल पाया, तो ऑटोमेटिकली जो खरीदार है उसके मन से भी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट आउट हो जाएगा। तो हमारा लाभम में यही रहता है कि हमारी गोल्ड इंडस्ट्री को ये सब छोटे मीडियम ज्वेलर्स की ज़रूरत है, जिससे ग्रोथ आए। और यही जैसे अभी इन्होंने प्रदीप भाई ने बात की कि गोल्ड किस तरीके से, मतलब अभी जीजेसी, अभी इस बारे में मैं चाहूँगा नितिन जी बताएं कि एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है और फ्यूचर में जाके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का क्या कुछ फ़ायदा कुछ ज्वेलर्स को हो सकता है उनके खुद के बिजनेस में, थोड़ा मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं। साहिल, जब पेंडेमिक चल रहा था और उसके 4 साल पहले जीजेसी ने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था, क्योंकि हर बार ड्यूटी इसलिए बढ़ाते थे कि गोल्ड को डिस्करेज करना है, गोल्ड का इंपोर्ट कम करना है। गवर्नमेंट गोल्ड के बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हर बार हमको ये महसूस होता हर बजट में कि गवर्नमेंट जेम एंड ज्वेलरी के अगेंस्ट में है। लेकिन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा डर है और जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा चिंता है वो आती कि गोल्ड इंपोर्ट वो 800 से 1000 टन होता और उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता और बहुत बड़ा पैसा देश के बाहर जाता हर साल। तो उसके सॉल्यूशन के लिए जीजेसी ने गवर्नमेंट के पास में 2016 में मैं जब चेयरमैन था एक पूरा प्रपोजल बना के दिया था। ऑफिशियल फिगर की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 25,000 टन गोल्ड लोगों के पास में है। ये पिछले 30 साल का ऑफिशियल इंपोर्ट है। वो स्मगलिंग से कितना आता है लोगों के घड़े में, घरों के अंदर, रिसाइकल, स्मगल्ड, नॉन स्मगल्ड, करप्शन का कितना क्या है उसका कोई हिसाब नहीं है।
लेकिन ये 25,000 टन सोना सिस्टम से बाहर चल रहा है, ये किसी के घर में है, कोई अंडर द कारपेट चल रहा है, कोई के लॉकर में है। तो हमने गवर्नमेंट को एक पूरा सिस्टम बना के दिया था। उसके बाद में मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन ने और बना के दिया, और जो हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था वो प्रपोजल का 50% डिस्काउंट करके गवर्नमेंट ने दिया है। उसकी वजह से ये प्रपोजल सक्सेस नहीं हो रहा है। आज भी कस्टमर को भी पता नहीं है, ज्वेलर्स को पता नहीं है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चल रही है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऐसी है कि आप आपके पास का सोना आरबीआई के अंदर दे दीजिए, आरबीआई उस सोने के अगेंस्ट में आपको 2.5% इंटरेस्ट देगा। अभी हम सोना देके पैसे लेते और उसका ब्याज देते, ये आप सोना देंगे तो गवर्नमेंट आपको देंगी। ये अपना प्रपोजल था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें जो सबसे बड़ा मिसिंग किया, जो हम बार बार रिकमेंड कर रहे हैं, अभी पेंडेमिक के समय में आशीष जी, संयम, हम सब लोग निर्मला सीतारामन जी से मिले, सारे सब्जेक्ट पे उन्होंने ज़्यादा उत्साह नहीं बताया, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन बोले बराबर निर्मला जी ने पूरा इंटरेस्ट बताया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो हमने प्रपोजल दिया है वो ऐसा दिया है कि जब तक के रिटेलर्स को ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन की सक्सेस नहीं होंगी। अभी जो स्कीम है उसमें आपके घर का गोल्ड आप किसी रिफाइनरी के पास में ले जाके रिफाइन करो, वो सोना आप BIS के अंदर जाके प्योरिटी चेक करो, प्योरिटी चेक करे हुआ हॉलमार्क किया हुआ सोना RBI में जाके डिपॉजिट करो, और RBI में डिपॉजिट होने के बाद में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू होगा। तो कोई भी लेडीज़ या जेंट्स है जिसके हाथ में 200-500 ग्राम सोना जो अनयूज है, वो इतनी लंबी प्रोसेस में जाएगा नहीं। वो गलाई वाले के पास उसको पता नहीं है, होल मार्किंग उसको नहीं है, प्लस उसको RBI में जाके जमा करना नहीं है। हमने जो गवर्नमेंट को स्कीम दी है उसमें इतना सिंपल दिया है कि आप ज्वेलर्स के पास में जाइए, ज्वेलर्स को वो सोना दे दीजिए, ज्वेलर्स आपको वो सोना रिफाइन करके देंगे, उसका वो सर्टन चार्ज लेंगे लीगली। हमने 0.5% सजेस्ट किया क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होगा, 0.5% भी बहुत बड़ा होता। वो सोना जो उसने ज्वेलर्स ने सर्टिफाइड कर दिया, वो सोना आप ज्वेलर्स को बोलिए, ज्वेलर्स आपके बिहाफ के अंदर RBI में जमा करके आपको सर्टिफिकेट देंगे, और आप उसको उसके बाद में जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से काम करो। तो गवर्नमेंट के अंदर जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ज्वेलर्स को सोना दे देवे, कोई 2-4-5 लोग 10 किलो दे देवे और वो ज्वेलर्स भाग गया तो क्या होगा। बैंक वालों ने और गवर्नमेंट ने वहाँ मीटिंग में पूछा, तो हमने, हमारे CA बैठे थे, हमारे एडवाइज़र बैठे थे, हमने सबने यंत्रणा करके उनको बोला कि हम कल इसका भी सॉल्यूशन निकालते, और हमने जो उनको सॉल्यूशन दिया वो बहुत बढ़िया दिया। हमने अभी जो उनको सॉल्यूशन दिया ये दिया है कि एक समझो खंडेलवाल ज्वेलर्स है, वो 5 किलो सोना गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जमा करेंगे, वो 5 किलो सोना हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा। वो डीमैट अकाउंट के अंदर उसके बाद सपोज अभी ये ज्वेलर्स नहीं, हमारे लड्डा जी बैठे हैं, औरंगाबाद से आए, ये लड्डा जी 0.5 पाउंड किलो सोना लेके हमारे पास में आए, हमने प्योरिटी चेक किया, फाइन किया, हमारा इनका ठहर गया कि 497 ग्राम इसमें फाइन निकलेगा। वो 490 ग्राम सोना मैं मेरे डीमैट अकाउंट से इनके अकाउंट में स्पॉट पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। मतलब ये मेरे शोरूम या मेरे ऑफिस से निकलने के पहले सोना इनके अकाउंट में आ जाएगा। एक बार इनके अकाउंट में आ गया, जैसा शेयर्स में होता है, एक बार अकाउंट में आने के बाद में ये उनकी जवाबदारी है, क्योंकि उनके अकाउंट से मैं निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि डिजिटली ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा। मेरे 5 किलो में से 497 ग्राम सोना कम हो जाएगा, उतना सोना वहाँ पे लड्डा जी के नाम से हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा सोना कम कम होते जाएगा, लोगों के पास में चला जाता रहेगा। तो इसमें रियल टाइम इन्वेंट्री होंगी, किसी के छोड़ के भागने का काम नहीं रहेगा, और ये किन लोगों का सोना डिपॉजिट है, उनका प्रोसेस कैसा है, वो ऑडिटेड है कि नहीं है, इसकी लिस्ट भी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी, ताकि कोई किसी तीसरी जगह पे जाके फंसे नहीं। और इसकी एक और खूबसूरती हमने दिया था कि अगर आज सोना आप देते हैं, सोने में कम ज़्यादा प्योरिटी निकलती है, स्टोन का वेट कम ज़्यादा आता है, एक आम आदमी अपने ज्वेलर्स पे फेथ रखता है, ना RBI पे रखता, ना गलाई वाले पे, ना होल मार्किंग पे। तो अगर वो अपने उसके लिए ज्वेलर्स मतलब उसका फैमिली डॉक्टर होता है, जब भी कोई थोड़ी मोटी अड़चन आई, कुछ लगा, वो जाके अपने ज्वेलर्स के पास जाता है। तो दूसरा हमने गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे, अब मेरा सोना है, स्टोन कम ज़्यादा हो, मीना कम ज़्यादा हो, प्योरिटी कम ज़्यादा हो, मैं तो उसको अच्छे के अंदर ही लूँगा जो मेरे को रेपुटेशन रखना है, तो ज्वेलर्स के पास में आना चाहिए। तो ज्वेलर्स के मार्फत आएगा तो ज्वेलर्स को 0.5% मिलेगा। इसमें हमने बहुत एडवांस सिस्टम दिया गवर्नमेंट को। फिर बात आई कि सोने का अगर रेट बढ़ गया, 5 साल के बाद में अगर किसी ने सोना गवर्नमेंट को वापस मांगा, अब 30,000 का सोना 60,000 हो गया, तो गवर्नमेंट लॉस कैसे बेयर करेंगी, या गवर्नमेंट इसको हेज कैसा करेंगी। हमने उसका भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट को दिया। हमने बोला कि ये सोना
जो आपके पास आ रहा है, जो आपको स्ट्रीमलाइन से स्ट्रीमलाइन में लाना है, जो लोगों के पास में अंडर द कारपेट या लॉकर में पड़ा है, तो आप यही सोना ज्वेलर्स को वापस से लेंड कर दो। ज्वेलर्स को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा नहीं, आप सोना दे दीजिए और गवर्नमेंट उस सोने को सोने के फॉर्म में लेना देना करे, उसका इंटरेस्ट भी सोने में लेवे तो, और ड्यू डिलीजेंस पूरा करे। जो एक लोन लेते समय जो गवर्नमेंट फैसिलिटी करती है, तो हमने उसका पूरा लीगल सॉल्यूशन गवर्नमेंट को दिया है कि आप वो सोना वापस ज्वेलर्स को दीजिए। 1 करोड़ देने के बजाय उसको 2 किलो सोना आप दे दो, तो गवर्नमेंट को हेज करने की जरूरत नहीं है उसका रेट का। जब भी उससे वापस लेना है, सोना ही गवर्नमेंट का उसके पास में रहेगा। तो हमने ऐसा दिया, आधा % आप ज्वेलर्स को दीजिए, 3.5% इंटरेस्ट में आप सामने वाले जो जिसने दिया है उसको दीजिए, 4% खर्चा हो गया, आधा % बैंक अपना ये सारा ट्रांजेक्शन करने का पैसा ले ले हुए, और 5.5-6% में आप ज्वेलर्स को दे दीजिए, जो आज 10 से 15% के बीच में ज्वेलर्स को लेना पड़ता है पैसा। तो उससे गोल्ड के फॉर्म में रहेगा, वो लिक्विडेट कभी नहीं होगा, और इससे एंड टू एंड सॉल्यूशन होगा। और एक अंदर की बात बता देता हूँ, जैसे ही कपाट खाली हो गया, घर के 4 मेंबर के नाम से 2 किलो सोना उसने ज्वेलर्स के पास जमा कर दिया, फिर वो साइकोलॉजी लेडीज़ की चालू हो जाती कि माझ्याकडे तो कहीं सोनाच नहीं है, उसको कागज से कोई लेना देना नहीं, फिर हमारा सेल चालू हो जाएगा। ये बात गवर्नमेंट को नहीं बोली हमने, क्योंकि जैसे खाली होगा वो फिलअप द ब्लैंक करने के लिए फिर शोरूम में आएंगी। तो हमने ये गोल्ड मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट को दिया है। इस बार हम इसको थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ रहे हैं। इस बार जो हम जोर पकड़ रहे हैं, हमने PM को लेटर लिखा है अभी 2 दिन पहले ही, और उसमें हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि अगर आप इतना आत्मनिर्भर पे जोर दे रहे हैं, तो हमारा जो सोना बाहर से आ रहा, अगर जेम एंड ज्वेलरी में आपको पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है, तो आप GJC के साथ में एक मीटिंग करिए, हम आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे। और GJC ने ये पूरा जो बनाया है, मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताया, लेकिन इसका 150 पेज का डॉक्यूमेंटेशन लीगल फर्म के साथ में 1,65,00,000 रुपए इस पर हमने पूरा लीगल प्रोसीजर का पैसा दिया है। गवर्नमेंट के जितने रूल है, बैंकिंग के जितने रूल है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट के जितने रूल है, सिर्फ हमने गवर्नमेंट को बोला कि एक लिमिट तय करिए, उस लिमिट तक के आप सामने वाले को इसका सोर्स नहीं पूछेंगे। एक कस्टमर आता है तो ये आधा किलो तूने कहाँ से लाया। दूसरा एक मेजर फर्क है, गवर्नमेंट की जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसमें 3 साल, 5 साल और 8 साल का लॉकिंग है। हमने बोला ये आप लॉकिंग मत दीजिए, आपके पास सोना आते रहेगा। एक मराठी कहावत है, आबा गेले नातू झाला, गोल्ड आते रहेगा जाते रहेगा। तो आप जैसा FD है, भले आपने 3 साल के लिए FD रखा, लेकिन आपको बीच में ब्रेक करना है तो एक सर्टन चार्जेस देके यू कैन ब्रेक योर FD ऑल्सो। तो गवर्नमेंट लोगों को एक फैसिलिटी भी दे दीजिए कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपना गोल्ड कभी भी गवर्नमेंट से वापस ले सके। तो ये एक नटशेल के अंदर जो 160-65 पेज का मैं आपके सामने 5-10 मिनट में रखने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपील करता हूँ कि नहीं समझ में आया तो पूछिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसमें अगर आपको कोई बेटर सुझाव या सजेशन लगता है तो वो ज़रूर दीजिए। ये प्लेटफॉर्म वन साइडेड आप लोगों को बताने का नहीं है। हम चाहते कि आपसे हमारे पास में फीडबैक आना चाहिए जो हम गवर्नमेंट के पास में लेके जा सके। थैंक यू। इसमें मैं चाहूँगा आशीष जी भी कुछ इनपुट दें, कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नितिन भाई ने आपको पूरा स्कीम समझा दिया, लेकिन नितिन भाई जब हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए थे तो ये स्कीम फेल होने के प्राइमरीली सिर्फ 3 कारण हैं। उन्होंने ब्रॉडली जो हमने कहा था उसमें से 90-95% मान लिया है, लेकिन देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन लिप एंड द कप। उसका कारण 3 है। नंबर 1, ये स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉइन किया है और वो रन करने को दिया है रिजर्व बैंक को, और वो ये दोनों संस्थाएं अपनी अपनी रीत से चलती है, मतलब पैरेलल ट्रैक है, कभी वो मिलती नहीं है। तो जो जिस रीत से रिजर्व बैंक इम्प्लीमेंट कर रही है और जिस रीत से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको कॉइन किया है उसमें ही फ़र्क है, इसलिए नहीं हो रहा है। उसका मैं सेकंड कारण देता हूँ जो एग्जाम्पल बनेगा। अगर किसी ने GMS में सोना देने का ट्राई किया है तो उसमें यू हैव टू गिव अ टेन्योर कि मैं कितने महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास डिपॉजिट रखना चाहता हूँ। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखते हैं उसमें एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट है, मतलब 0.75 पैसे या 1 रुपये के अंदर इंटरेस्ट रेट उन्होंने दिया है साल का। और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसमें 2.5-3% इंटरेस्ट देते हैं। तो आइडियली जो हायर इंटरेस्ट रेट वाला है उसमें लोग रखना चाहते हैं और उसमें रखते हैं। लेकिन सिंपल चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि रिजर्व बैंक ने अलाउ किया है जो वापस सोना ज्वेलर के पास आना चाहिए,
तो उन्होंने क्या कि जो शॉर्ट टर्म पे रखा हुआ सोना है वही सिर्फ बैंक्स कैन लेंड बैक टू ज्वेलर, जो एकदम कम इंटरेस्ट वाला है, तो उसमें कुछ सोना आता ही नहीं है। जो भी आता है सोना वो सब लॉन्ग टर्म में आता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो बैंक्स लेंड बैक नहीं कर सकती। तो दोनों हाथ बांध दिए है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। 99.9% सब लॉन्ग टर्म में आता है और 0.01% जो आता है वो शॉर्ट टर्म में आता है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट कम है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसमें क्लैरिटी नहीं है कि अगर मैं 500-700 1 किलो का माल रखता हूँ तो मेरा इसमें इंक्वायरी होगा क्या। ये क्लैरिटी हम बहुत टाइम से उनसे मांग रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर 500 ग्राम पर पैन कोई भी इसमें इन्वेस्ट करता है तो प्लीज़ डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, 500 ग्राम तक हमको परमिशन दे दो, विदाउट एनी क्वेश्चंस यू कैन इन्वेस्ट। लेकिन अभी भी इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये 3 चीज़ों के लिए मेन गाड़ी अटका हुआ है। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ये प्राइम मिनिस्टर को इसलिए हमने लेटर लिखा है क्योंकि जब पेंडेमिक चल रहा था और माइंड स्पीक चल रहा था, उस समय अचानक पीएमओ से फ़ोन आया, पीएम ऑफिस से, पीएम का नहीं, पीएम ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, हमने जो उसमें क्वेश्चन रेस किए थे वो आपने सारे सॉल्व किए होंगे, तो उसकी सुधारित कॉपी भेजो करके। हमने 3 घंटे के अंदर सारे 5 चेयरमैन ने मिलकर मीटिंग करी और गवर्नमेंट को तुरंत दिया। मतलब पीएम ऑफिस इसके अंदर इंटरेस्टेड है, ये हमारे समझ में आ गया था, इसलिए भी हमने पीएम को ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मांगी है। अगर पीएम की अपॉइंटमेंट हमको मिलती है और पीएम की नहीं भी मिली तो इनके पास में एक बहुत बड़ी टीम होती है, जो इंटेलेक्चुअल टीम होती है, वो पीएम के बिहाफ के अंदर मीटिंग अटेंड करता हमसे समझते हैं और अपने ब्रीफिंग के हिसाब से करते हैं। तो होपफुली आने वाले 1-2 वीक के अंदर हमको वो अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और जो हमने निर्मला सीतारमन जी को दिया था, हो सकता है कि आने वाले बजट के अंदर उसके अंदर कुछ सुधारना भी आ सकती है, क्योंकि हम उसको कंटिन्यूस परस्यू कर रहे हैं, ताकि हम भी चाहते हैं कि सोना इंपोर्ट कम हो और जो देश के अंदर सोना लोगों के पास में अनयूज पड़ा है, जो गहने पहन रही होनी, जो अनयूज सोना है वो कम से कम एक सिस्टम के अंदर आ जावे और ज्वेलर्स को सस्ता लोन मिले। अभी टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं और करंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेरा सवाल संयम भाई से है। आज की डेट में सब ज्वेलर्स थोड़े से, जैसे इलेक्शन का पूरा क्लाइमेट है, तो इलेक्शन जब डिक्लेयर होता है और आचार संहिता लगती है, उस टाइम के लिए क्या हम देख रहे हैं कि रिटेल साइड में, सेल्स में या B2B काम में कोई अड़चन नहीं है, तो उसके बारे में क्या विचार है और क्या उसके बारे में जीजेसी कर रही है? देखिए, हमारी मीटिंग, हमने एक लेटर लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हमारी सोच है कि 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो इलेक्शन डेट्स हैं वो आ जाएंगी। 9 या 10 अप्रैल के आसपास एक ऐसा फीलर है, एक्चुअल नहीं बता सकते, कि अप्रैल के आसपास इलेक्शन चालू होंगे, 7 फेजेस में होंगे, मई मिड तक रहेंगे और मई मिड के बाद रिजल्ट आएगा। अभी भी जब स्टेट के इलेक्शंस हुए थे तभी तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी माल अटका था ज्वेलर्स का, जिन्होंने पार्सल भेजे थे और पार्सल भेजने के बाद जो BVC सीक्वल है उसके अंदर उन्होंने माल वैन के साथ रोक लिया और वैन के साथ रोकने के बाद उस वैन को जब 1 महीने तक रोड के ऊपर सीज करके रखा। BVC से हमारी मीटिंग हुई थी, सर्टन जो वैन्स रोकी थी उन्होंने, और उसको रोकने के बाद GJC ने वहाँ पर मीटिंग की, तेलंगाना के अंदर इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ वैन छोड़ी और कुछ वैन एंड में छोड़ी। वो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि वाउट सेल बिल चाहिए, GST इनवॉइस चाहिए, इनकम टैक्स के अंदर ये जो पार्टी का अगर पकड़े तो इमीडिएटली छोड़ने के लिए प्रोविज़न चाहिए। ये सब चीज़ें 2019 के अंदर जब हमने किया था, वो लेटर हमारे पास है, तो बोले वही लेटर को फॉलो करो। सो वो लेटर हम आपको भेजेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जैसे मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर के ऊपर भी जो इलेक्शन इंचार्ज है हर सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर, उसको हम आप लोगों को लेटर देंगे। वो लेटर आप अपने एरिया हेड से मिले, ताकि जेन्युइन जो व्यापारी या कोई लेडी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया जो एक्चुअली परमिसेबल है 2 लाख रुपया वो लेकर आना चाहे, उसको भी 50,000 रुपये के ऊपर का लॉ पकड़ के उसके पैसे को जब्त ना किया जाए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि जब आचार संहिता लग जाती है फरवरी से मई तक
यानी अक्षय तृतीया का जो भी फेस्टिवल आता है, बीच में गुड़ी पाड़वा आएगा, वो सारा का सारा खराब हो जाए, वो उसका लेटर और फ्रेमवर्क हम आप लोग सबको देंगे और उससे आप अपने जो भी इंचार्ज हैं उनको मिले और उनको मिल के ये लेटर दे के अपनी बात पूरी रखें ताकि अंत में प्रॉब्लम नहीं आए। B2B शो जो 2 से 5 अप्रैल को हो रहा है GJS का, उसके लिए भी हमने एक लेटर दे दी है ताकि ज्वेलर्स वहाँ पर टनों भर माल लेकर आते हैं, 20,000 करोड़ के ऊपर का व्यापार होता है, जिससे ये बात हमने मिनिस्ट्री को भी लिख दी है। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर माल लेके आ सकते हैं, माल लेकर आके अपने व्यापारी को डिलीवरी दे सकते हैं ताकि 10 अप्रैल से जब भी इलेक्शन उनकी सोच है कि चालू हो तब तक आपकी डिलीवरीज का भी सॉर्टेड रह जाए सिस्टम। और ये सोच से ही आगे बढ़ने के लिए हम पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, तेलंगाना आंध्रा के अंदर भी जब पार्सल्स रोके गए थे, GJC ने वो पार्सल्स और MP के अंदर, हमारे रतलाम के अंदर और जबलपुर में जो रोके गए थे, उसको भी GJC ने छुड़वाया था वहाँ जाके। और अभी भी अगर लीगल तरीके से सही पेपर वर्क है तो हम इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। 100 पार्सल के अंदर अगर मैंने भेजा, हरडे जी ने भेजा, रोकड़े जी ने भेजा, अगर हम 4-5 जनों ने पार्सल भेजा लेकिन एक पार्सल भी पूरे ग्रुप में सही पेपर वर्क नहीं है तो वो 5 पार्सल नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा ये आप सबसे कहना है कि अप्रूवल वाउचर, डिलीवरी चलान, ये सब में पार्सल रुकने के कारण बढ़ जाते हैं। जो सेल बिल होता है या सही तरीके से सेल्स रिटर्न का वाउचर विद GST होता है, उसको जनरली वो इमीडिएटली छोड़ देते हैं जो ऑफिसर्स हैं, चाहे GST हो, इनकम टैक्स हो या दूसरे कोई लोकल पुलिस के तरफ से कोई सिस्टम हो। थैंक यू सेम भाई। अभी राजेश भाई से मेरा ये क्वेश्चन है कि PMLA जो आज के रूप में है और GJC उनका क्या है कि मतलब ज्वेलर्स को निदान हो, मतलब कि क्या रूल बोलता है, और GJC क्या बीच में चर्चा हुई थी कि नोडल ऑफिसर GJC बनती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा मैं चाहता हूँ जानकारी दीजिए। PMLA एक ऐसा कानून है जिससे डरने की भी ज़रूरत है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरना उनको है जो गलत तरीके से काम करते हैं और डरना उनको बिल्कुल भी नहीं है जो सही अपना ढंग से काम करते हैं। देखिए, कानून अगर बनता है तो हमारे अच्छाई के लिए बनता है, हमारे भविष्य के लिए बनता है, और ये शॉर्टकट्स होते हैं ना, वही हमें तकलीफ देते हैं। कानून वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम हुआ है और जिस तरीके से सरकार ने ये फ्रेम होने से पहले ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ बैठ के बातचीत की और इसको जिस तरीके से फाइन ट्यून किया गया, मुझे लगता है कि ये कहीं पर भी किसी भी ज्वेलर्स को हार्म नहीं करता है अगर वो सही दिशा में सही ढंग से अगर व्यापार करते हैं। इसमें नॉर्मली GST का एक रूल है, अगर आपके पास 50,000 के ऊपर का अगर कोई व्यापार कर रहा है तो आपको प्रॉपरली उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर, एड्रेस रखना है। और वैसे भी हमारे यहाँ 2 लाख से ऊपर कैश अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पहले ही बैरियर्स बने हुए हैं जिससे कि PMLA में हमें डायरेक्ट कोई अफेक्ट नहीं होता है। और उनके वेबसाइट पे कुछ ऐसे नाम्स है जो नाम जिसमें आतंकवादी संगठन जो होते हैं, जो देश के हित में काम नहीं रहता, उनका जो हमारे लिए दुश्मन तरीके से काम करते हैं, उन लोग के कुछ नाम हैं। अगर ऐसे लोगों से कोई भी व्यवहार, फिर वो सेल हो, परचेस हो, कुछ भी हो, आपको उनसे व्यवहार करना नहीं है। अगर होता है तो आपको तुरंत जानकारी देनी है। और इसको जिनका टर्नओवर हैवी टर्नओवर है, केवल उन्हीं लोगों को नोडल ऑफिसर रखना है। छोटे टर्नओवर जिनका 500 से नीचे टर्नओवर है, उनको किसी प्रकार का आपको ऑफिसर या नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सभी अपने मेंबर्स के लिए नोडल ऑफिसर, हमारे सेक्रेटरी मितेश जी है, उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया है। इस वजह से उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई व्यवहार होता है तो आपको सिर्फ जानकारी आपको GJC ऑफिस में देनी होती है। अगर वो हमारे संस्था के अगर वो मेंबर नहीं है तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए उनको अपना एक तो नोडल ऑफिसर 500 करोड़ के ऊपर है तो रखना ज़रूरी ही है, बट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ जुड़ सकते हैं। मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। जो लोग GJC के मेंबर हैं उनको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब के बिहाफ के अंदर हमने 2000 करोड़ तक के मंगा था और सहारा स्टार के अंदर हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी। हम 5-6 जने थे, 2 घंटे में हमने ऑफिसर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराई। अगर GJC का नहीं भी है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है
और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके बिहाफ में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है, और जिसको नोडल ऑफिसर के पास में अगर वो लिस्ट तुमने गवर्नमेंट को सबमिट करी हुई है, समझो नागपुर का एसोसिएशन है और उसने लिस्ट सबमिट करी हुई है डिटेल के साथ में, केवाईसी के साथ में, तो ही उसको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जीजेसी के सारे मेंबर, जैसे हॉलमार्किंग में प्रोटेक्ट है कि कोई कोरोसिव एक्शन नहीं होगा, आपका कोई माल जब्त नहीं होगा, कायदेशीर कार्रवाई जो गलत करेंगे तो गलत होंगी, लेकिन कोई का माल जब्त नहीं होगा, कोई पे अन्याय नहीं होगा, जो हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, उसी तरह से जीजेसी ने अपने सारे मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। नोडल ऑफिसर सबके बिहाफ में मितेश डोरडा को अपॉइंट किया हुआ है और उसकी पूरी लिस्ट गवर्नमेंट पे सबमिट कर दी है कि आपके बिहाफ में ये नोडल ऑफिसर है, तो इंडिविजुअल किसी को भी करने की जरूरत नहीं है। जो राजेश भाई ने कहा वो सही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संभाल के काम करना है। तो उसमें क्या संभालना है मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। आशीष जी, राम गोपाल वर्मा जो है ना, उसके दोनों पिक्चर है, डरना जरूरी और डरना मना है, तो दोनों है इसके अंदर। दोनों है। तो अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ के अंदर है तो इंडिविजुअली आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी एसोसिएशन के थ्रू आपको रजिस्टर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी अगर प्रेशियस मेटल या प्रेशियस स्टोन में काम धंधा करता है, भले मैं 1 रुपये का डायमंड बेचता हूँ, ख़रीदता हूँ, तो मैं PMLA के अंडर आता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि मेरा 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है तो ये कायदा मुझे लागू नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप 1 रुपये का भी काम करते हो, एक पन्ना बेचते हो, डायमंड बेचते हो, सोना बेचते हो, या चांदी बेचते हो, या प्लेटिनम बेचते हो, या ख़रीदते हो, आपके लिए PMLA लागू हो गया है। उसमें आप रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं होते हो, क्योंकि आप 500 के ऊपर का आपका ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, इसलिए आपको कोई नोडल ऑफिसर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक फैमिली आती है, वो शादी की खरीदारी करते हैं, और किसी ने, अंकल ने थोड़ा सोना लिया, बहू ने थोड़ा सोना लिया, बच्चे ने थोड़ा सोना लिया, ऐसे करते करते 2-4 ट्रांजैक्शन में 30 डेज पीरियड रनिंग, 1 महीना, 1 जनवरी से 31 जनवरी नहीं है। अगर 10 जनवरी को किसी ने माल लिया है तो अगले 9 फरवरी तक 1 महीना गिनते हैं। रनिंग 1 महीने के अंदर अगर किसी एक पार्टी ने या उनके रिलेटेड कोई पार्टी है, उन्होंने कुल मिला के 10 लाख के ऊपर का कैश में ट्रांजैक्शन किया है, तो देन यू हैव टू कंपल्सरीली रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन टू द अथॉरिटीज़। आपके पास नोडल ऑफिसर है कि नहीं है, आपका 500 करोड़ के ऊपर का धंधा है कि नीचे का धंधा है, उसका कोई संबंध नहीं। बाय लॉ आपको ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप ये मतलब कायदे का उल्लंघन कर रहे हो। आशीष भाई ने अभी कहा है कि 1 रुपये का भी व्यवहार होता है तो आपको PMLA। मैं इसके और आगे जाता हूँ। अगर कोई 1 रुपये का भी व्यवहार नहीं करता है और वो अटेम्प्ट करता है आपके यहाँ लेन देन करने के लिए, वो आता है कि भाई मुझे 20 लाख का ज्वेलरी खरीदनी है, ये मैं कैश में दूंगा, और चले जाता है, आपने मना कर दिया, तो वो भी एक्ट में है कि वो भी इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। तो 0 रुपये से स्टार्ट होता है, वो ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्टिंग के लिए 0 है, लेकिन आप 0 रुपये का प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल का बिजनेस करते हो तो आपको लागू नहीं है। अगर आप व्यवहार ही नहीं करते हो तो आपको लागू नहीं है, लेकिन आप 1 रुपये का भी व्यवहार करते हो तो यू आर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, बात ये क्लियर है कि आप व्यापार करते समय में जितना आप लॉफुल बिजनेस करेंगे उतना आप सेफगार्ड रहेंगे। अनलॉफुल बिजनेस कहीं ना कहीं आपको परेशान करता ही करता है। और जिस तरीके से आपने GST आया, बाद में और भी जिस तरीके से अभी सबके रिपोर्टिंग्स धीरे धीरे आया, ऑडिट ट्रेल है, ऐसे कई चीज़ें हैं, और सरकार अभी AI पे काम कर रही है। तो ये समझिए कि आपकी हर चीज़, आप कहाँ बैठे, आप मोबाइल साथ में लेके घूमते हैं, अगर आप मोबाइल में 4 बार कोई वर्ड बोलिएंगे ना, जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड 4 बार बोलिए, तो आपको वो ऐड दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका मोबाइल हर चीज़, आपका डेटा आपसे ले रहा है। जो भी आप बोल रहे हो वो पूरा डेटा कहीं ना कहीं AI के माध्यम से पहुंच रहा है। तो जो भी अभी तक के अपने आप को जो सुधार नहीं पाए होंगे, तो अभी भी मौका है। शायद 2024 के इलेक्शन के बाद वो मौका भी उनके हाथ से निकल सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, पिछले 3-4 महीने से जब से ये PMLA लागू हुआ है,
तो 2-3 कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो रही है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे मन में क्या है कि मैंने कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन किया नहीं है तो मैं तो क्लियर हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अगर आपने RTGS या चेक से पेमेंट लिया है तो आप PMLA के अंडर अटकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये लॉ का नाम ही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पैसा धोना, काले से सफ़ेद करना। तो उसमें बहुत बारी जब डीमॉन में भी ये केसेस हुए थे कि A पार्टी आया कि मेरे को सोना चाहिए 1 किलो, मैं आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करवाता हूँ। B पार्टी से ज्वेलर के पास 1 किलो सोने का पैसा बैंक ट्रांसफ़र से आता है ऑफिशियल, और बिल बनता है A पार्टी के नाम का। इट इज़ प्रिसाइजली यही चीज़ उनको रोकनी है। B का पैसा ऐसा घूम के A के पास चला गया, ये मनी यहाँ से यहाँ लॉन्डर हुआ। तो आप जब कभी भी इवन RTGS या चेक से काम करोगे, मेक श्योर कि जिस पार्टी के यहाँ से पेमेंट आया है उस पार्टी के नाम से ही बिल बने। भले उनको जिसको गिफ्ट देना है उसका साइड में नाम लिखो, लेकिन जिसके पास से पैसा आया है उसका बिल पे नाम होना ज़रूरी है, सो दैट यू आर क्लियर। और उसी नाम का पैन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारे लोगों में केस हुआ था, बिकॉज लोग तो समझते नहीं थे, तो मेरे पास तो पेमेंट आ गया पूरा, तो मैं क्लियर हूँ, मैंने दे दिया। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ, जैसे राजेश भाई ने कहा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो फोर्सफुली किसी को कहते हैं तुम इधर इसके पास पैसा दे दो, यहाँ पे ट्रांसफ़र करो, या जिसको मनी लॉन्डर करते हैं वो करते हैं। तो भले आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है, 1 रुपये का भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन सामने वाले का इंटेंशन है तो आप अटक सकते हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको जवाबदेह बनाया गया है। तो बी केयरफुल। चेक ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी ये आपको ख्याल रखना है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशन दे रहा हूँ, क्योंकि अपन सीधे चलेंगे लेकिन सामने वाला सीधे चलता है कि नहीं हमें मालूम नहीं। इसके पीछे रीज़न भी सरकार ने बड़ी तरीके से समझाया था। आपको याद होगा US पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, और वो जो पायलट थे उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया था एरोप्लेन चलाने का, तो उन्होंने किस तरीके से फंड वहाँ इकट्ठा किया था, उसके पीछे पूरी कहानी थी। वो क्या करते थे, डायमंड पहन के जाते थे और वहाँ जाके डायमंड बेचते थे, और वो पैसे से वो वहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी उसमें इन्वॉल्व हुई थी, इस वजह से ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, और ये केवल इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में सब जगह है। इस वजह से कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों को भी ये कानून है। तो अपनों को एक लॉफुल बिजनेस करना है, ये ज़्यादा अच्छा है। PMLA आप देखने जाएंगे, US में जाएंगे तो उधर भी $10,000 है, मलेशिया में जाएंगे उधर भी है, इंडियन रुपीज़ के अंदर 10 लाख। हम लोग कतर गए थे, कतर के अंदर भी वहाँ के इंडियन वैल्यू के हिसाब से 10 लाख। हर कंट्री के अंदर PMLA आ चुका है, जो तो सिर्फ इंडिया के लिए लागू नहीं है, हर कंट्री के लिए है। तो सारी वर्ल्ड चाहता है कि चेक में व्यापार हो ताकि टेररिज्म एक्टिविटी कम हो। साहिल भाई, अभी अपन गोल्ड के जो पार्क है उसके ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा है। ये PMLA ने इतना टाइम ले लिया, और उसमें भी एक क्वेश्चन देखा कि आशीष जी ने बोला था कि रनिंग मंथ जरा स्पेसिफाई करिए। 10 लाख मतलब 30 दिन डेट रनिंग मंथ मतलब कैलेंडर मंथ नहीं, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा नहीं। हाँ। आपने डे 1 वो 15 मार्च भी हो सकता है, 15 मार्च पे कस्टमर पहली बार आया, हाँ। तो उसके बाद के 1 महीने में 30 दिन मतलब ऐसे, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नहीं ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और खुशनुमा माहौल में आते हैं, थोड़ा टेंस हो गया। तो ज्वेलरी पार्क, गोल्ड सूक और ये सब का विदर्भ से क्या संदर्भ है, ये अभी नितिन जी थोड़ा बताएं। मेन मुद्दा ये है कि जब ये एडवांटेज विदर्भ की बात चल रही थी, तो राजेश के पास में गडकरी जी ने बोला कि बहुत समय से बात चल रही है गोल्ड पार्क और विदर्भ के अंदर कैसे गोल्ड का बिजनेस बढ़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। तो उसके लिए राजेश की मेरी मंत्रणा हुई, हमने हमारे चेयरमैन से बात करी, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा निर्णय और सबसे पहला जो अपन ने किया, जो गडकरी जी के साथ में नागपुर में मीटिंग हुई, और 24 घंटे के अंदर हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया, जिस रिपोर्ट के अंदर हमने विदर्भ का इंडिया का पहला गोल्ड पार्क का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। मेरे पास में, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, बहुत समय कम है, क्योंकि दूसरे सेशन के भी लोग इसमें आ चुके हैं। हमारे पास में
पूरे वर्ल्ड के एग्जीबिशन हमने देखे हैं, मतलब हम लोग स्विट्ज़रलैंड के भी गए, बाज़ल भी गए, अमेरिका भी गए, अभी चेयरमैन के साथ में मैं राजेश हमने भी 4 कंट्री का टूर किया। तो जितने गोल्ड सुक हमने देखे इंक्लूडिंग दुबई, हमने जो गोल्ड सुक का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है वो ये सबसे एडवांस है। ये इसलिए एडवांस है कि जितने भी गोल्ड सुक बने हैं आइदर दे आर B2B और दे आर B2C। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अभी 2-3 इंडिया में चालू हो रहा है पूरा क्लस्टर बना के, ये पहला गोल्ड पार्क का हमने पूरा गवर्नमेंट के पास में सबमिट किया है। और गडकरी जी ने भी इतनी फुर्ती बताई कि हम जब यहाँ पे थे दूसरे दिन उन्होंने बुला के मैं निकल गया था, राजेश को बुला के लंदन स्ट्रीट पे एक जगह भी दिखा दिया, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया और सिंगल विंडो के अंदर अपने पार्क को क्लियरेंस देने के लिए उन्होंने अपने को परमिशन दे दिया। लेकिन ये बोलना आसान है, पहले तो क्या गोल्ड सुक का मतलब क्या और गोल्ड सुक हम किस प्रकार का बना रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, कितने मीटर का बांधकाम रहेगा, कैसा रहेगा, हमारा पूरा दिया है आपके अंदर किस टाइप का रहेगा। लेकिन आप मोटा मोटी स्ट्रक्चर को समझिए कि सबसे पहले तो 1, 2, 3 फ्लोर जिस हिसाब से हमारी रचना रहेंगी वो प्योरली रिटेल का रहेगा, प्योरली रिटेल का। जितने भी ब्रांड है रिटेल के वो रिटेल के सारे ब्रांड उसके अंदर आएंगे, चाहे वो विदर्भ के बाहर के हो, विदर्भ के हो या जिनका एग्जिस्टिंग नागपुर में, अकोला में, अमरावती में कहीं पे भी है वो भी उसमें आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब इसमें B2B आएगा इसी बिल्डिंग के अंदर या इसी प्रीमाइसेस के अंदर। अब B2B आ गया तो एक नया चलन शुरू हो गया कि अब कस्टमर भी डायरेक्ट संयम के पास में पहुंच गए होलसेल के अंदर ज्वेलरी लेने के लिए। और फिर कस्टमर भी वेस्टेज की लैंग्वेज में बात करने लग गए अभी, क्योंकि हमारे कुछ लोगों ने उनकी आदतें बिगाड़ी है। एक कस्टमर को लेके चले गए अपने बड़े फायदे के लिए, वो दूसरे के कान में बोलता है कि भाई चल इसमें अपने को ऐसा फायदा होता, बनवाई नहीं लगती, वेस्टेज में काम होता, ये सब शुरू हो गया था। तो यहाँ हम लोगों ने अरेंजमेंट ऐसी कर रहे हैं कि जो B2B है एरिया, उस B2B एरिया में जिसके पास में ज्वेलरी का GST नंबर होगा वही आदमी केवल एंटर कर सकेगा, क्योंकि वो सब GST नंबर सबके पोर्टल के ऊपर होते हैं। तो या तो जिनका परमानेंट पास बना रहेगा जो गोल्ड सुक में जा सकेगा, या अपने आप में से कितने लोग भारत डायमंड बोर्ज में गए, या फिर अभी जो सूरत का नया बोर्ज है उसके ओपनिंग पे हम लोग गए थे, कितने लोग हैं जो BKC में गए भारत डायमंड बोर्ज में। आपको पता है कि आपको एक OTP नंबर आता है आपके मोबाइल पे और वही सिस्टम के अंदर जाता है, जब दोनों मैच होता है तभी अंदर जाने की एंट्री मिलती है। वहाँ पे कैश अलाउड नहीं है, काफ़ी सारी चेकिंग होती है। तो यहाँ हम जो B2B बना रहे हैं वहाँ पे कोई भी कस्टमर एंड यूज़र वहाँ जा नहीं सकेगा। उसके बाद में हमारी कोशिश ये है कि इसी प्रीमाइसेस के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी करें। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है वो यह है कि आज संयम की फैक्ट्री है, मेरी है, प्रदीप भाई की, एक एग्जाम्पल के लिए हम सब ने सारी मशीन मल्टीपल की हुई है। इसके पास सारी मशीन मल्टीपल है, मेरे पास सारी है, इसके पास मल्टीपल, सब एडजॉइनिंग है। अभी बम्बई के मैंने काफ़ी सारे यूनिट विजिट करे, करोड़ों रुपए की मशीन कॉमन है और कुछ मशीनें ऐसी है जो करोड़ों रुपए की है और उसका पूरा प्रोसेस करने के बाद 1 या 2 घंटे उसका यूज़ है फाइनल फिनिशिंग में। तो अननेसेसरी टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो रही है। तो इसका ड्राइंग डिज़ाइन हम ऐसा बना रहे हैं जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक 10 करोड़ का लगता है उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 से 4 करोड़ आ जाए और हर एक की बचत हो। और जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ें, फॉर एग्जांपल CNC हो गया, बड़ा कास्टिंग यूनिट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे यूनिट होते हैं वो कॉमन रहेंगे और उसका एक कॉमन अलग एक उसका मैनेजमेंट रहेगा। आप आपका सोना ले जाइए, वो सोना प्योरिटी चेक करेंगे, वो आपको फैसिलिटी करा के दे देंगे, एनग्रेविंग करा के दे देंगे, कैड बना के दे देंगे। तो हर एक आदमी को ये पूरी यंत्रणा कर, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी नीचे आएंगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाने से MSME 28 से लेके तो 80% तक के सब्सिडी देती है, 80% तक सब्सिडी। और अगर ये सारा यूनिट आपको सोलर के ऊपर रनिंग अगर आप करेंगे तो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है 100% तक के सब्सिडी देने की। तो इसको बनाने के लिए हम बहुत केयरफुल आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसका कन्वेनर हूँ, प्रदीप जी उसके को कन्वेनर है और राजेश मेन बॉडी के अंदर है। और हमारी GJC के अंदर एक लीगल मीटिंग चल रही है कि आज हम यूनिट बना देते हैं, 10 से 15 साल 20 साल तक के इसको मिनिमम रन करने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एक कंसिस्टेंसी चाहिए एक बॉडी की, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो प्रोमिसेस लोगों को किया है, अचानक अगर मैं इसका कन्वेनर हूँ, मैं निकल जाऊँ, दूसरा आ जाए, वो मेरे से बेटर आ सकता है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है पहले का, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है रनिंग करने के लिए। बिल्डिंग बनने के बाद में प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी, वो जो पैसा लोन लिया जाएगा वो फेडे कैसे जाएगा, उसका कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी बॉडी बनना चाहिए, वो सेक्शन 8 कंपनी बनना चाहिए, सोसाइटी रजिस्टर होना चाहिए, ये सारे लीगल टर्म्स कंडीशन के लिए वर्ल्ड में कहाँ ऐसे चल रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है, वो सारे के लिए हम जल्दी में ना करते। हमने स्ट्रक्चर तो बहुत जल्दी बना लिया पूरा फ्रेमवर्क उसका, लेकिन ये स्टडी करने के लिए हम लोग अभी 31 तारीख को मुंबई में इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ हम लॉयर के साथ बैठेंगे, और उसके बाद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इस टाइप के गोल्ड सुख है उनकी स्टडी करने के लिए बुला रहे। तो शॉर्ट में ऐसा है हमारे यहाँ पे। अब रहा सवाल कि समझो ये बम्बई के मैन्युफैक्चरर है, अब हमारे को विदर्भ को बढ़ावा देने का है, तो उसके अंदर ये लोग अपनी एक शॉप या अपना एक आउटलेट यहाँ पे कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर जो फैसिलिटी रहेंगी, उस फैसिलिटी के अंदर हॉल मार्किंग है, डायमंड के सर्टिफिकेशन है, एक्सपोर्ट के लाइसेंस, एक्सपोर्ट का क्लियरेंस है, लॉजिस्टिक की पूरी इसके अंदर अरेंजमेंट रहेंगी, पैकिंग मटेरियल और जो अलॉयज लगते हैं, जितना भी सब्सिडी लगती है, सब्सिडरीज जो लगती है, वो सारी यूनिट इसके अंदर रहेंगी। इसी के अंदर इसका रिफाइनिंग यूनिट रहेगा। ये सारी मतलब एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन एक गोल्ड सुख बनाने के लिए उसमें करना है। बहुत लंबी लिस्ट है इसमें क्या क्या होने वाला है। इसमें बैंकिंग फैसिलिटी रहेंगी, अगेंस्ट लोन की फैसिलिटी रहेंगी, यहाँ से जो लॉजिस्टिक रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सके, कस्टमर क्लियरेंस का ऑफिस यहाँ पे रहेगा। ये सारे परमिशंस हमको गडकरी जी ने प्रॉमिस किया है कि एक नोडल ऑफिसर देके आपको सिंगल पॉइंट एजेंडा हम देंगे। तो आने वाले दिनों में अगर ऊपर वाले ने चाहा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें अगर सही बैठ गई, तो ये वर्ल्ड का पहला गोल्ड सुख होगा जिसमें B2C, B2B एंड मैन्युफैक्चरिंग विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी फैसिलिटीज़ के साथ में एक हैसल फ्री रहेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी के पूरे नॉर्म्स रहेंगे। अभी हम बहरीन गए थे, वहाँ पे बाहर का सिंगल शटर लग जाता है, कई लोग अपना माल शोकेस के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, रात को वो पूरा इंस्पेक्शन होता है। हाँ ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी के अंदर। तो बहरीन में गए थे तो उनका जो मेन गेट है वही स्ट्रांग रूम का दरवाजा है, और बाकी सब लोगों को कोई भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा इंश्योर्ड भी है, पूरा ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। तो ये सारे चीज़ों की हमने स्टडी स्टार्ट कर दी है। मैं थोड़ा घर में एक मैरिज थी उसके अंदर बिजी था, 4 दिन पहले फ्री हुआ और अब फिर से इस काम के अंदर लग रहे। अभी कुछ समय इसके शेप लेने में लगेगा, लेकिन ये हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का पहला गोल्ड सुख बनेगा अगर ये सारी चीज़ें सही बैठ गई तो। थैंक यू। उसमें सब आप लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और इसके अंदर सब बात है। एक तो पहले मैं नागपुर सराफा एसोसिएशन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, पुरुषोत्तम जी को जिन्होंने इसके अंदर लीड लिया, नितिन जी और राजेश जी के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अंदर जब हम मुंबई के अंदर कर रहे थे तो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने मुंबई से लिख के भी कुछ भेजे थे कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें सही रेट्स के अंदर लगेगी यहाँ पर, जो एक्चुअली मार्केट रेट से कम रेट में हो। दूसरी बात, जो हमें आज इंटरेस्ट रेट्स 10% 11% में पड़ रहे हैं, अगर हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जहाँ पर 5% के अंदर ही आपको लोन मिलता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम और उस जगह के ऊपर आप अपना रिटेल का सिस्टम डाल सकें। तीसरा एक सिस्टम है जो 100% स्टैम्प ड्यूटी की एग्जेम्पशन है इसके अंदर। SGST वेवर जो है वो 75% ऑन द SGST लगता है, 1.5% इधर 1.5% अपना IGST। तो 75% जो है SGST का जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उसके ऊपर सबवेंशन आए और 1 या 2 रुपए के अंदर यूनिट के अंदर पावर की सब्सिडी आए। और आज हम लोग क्या बोलते हैं कि दुबई गए, सिंगापुर गए और माल 10% 12% सस्ता लेकर आए, लेकिन आज भी आप मुंबई के अंदर अगर SEZ में जाएंगे तो अगर फॉरेन का कोई कस्टमर आता है, वो ज्वेलरी बाय करके वापस दुबई जाता है, तो उसको SEZ के जोन के हिसाब से वो पूरा इंटरनेशनल रेट से उसको कस्टम ड्यूटी और GST नहीं पड़ती है। सेम तरीके से अगर यहाँ पे अथॉरिटाइज करे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे नागपुर से, विदर्भ से कोई लड़की की शादी हो बाहर से और वापस यहाँ पर आके बाय करना चाहे यहाँ के डिज़ाइन की वजह से, तो यहाँ पर यूनिट में आके वो बाय करे तो उसको वो 10-15% कस्टम ड्यूटी और 3% का फ़ायदा हो सकता है उसको। लेकिन फ़्लाइट पकड़ के प्रूफ करना होगा कि वो वापस उस कंट्री में जा रही है। सो ये बातें हुई हैं
मेरा ये कहने का मतलब है जिसने इधर पार्ट नहीं लिया उसका बिजनेस ग्रो नहीं, लेकिन वो अपने बिजनेस में पीछे आ जाएगा। सो ये चीज़ें हमने मांगी है। हमारे को मुंबई के अंदर फडणवीस जी ने 90% चीज़ों में अग्री किया था। जब हम यहाँ पर अपना न्यू बॉम्बे के अंदर टुरबे में पार्क ला रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अग्री किया है। सेम चीज़ें हम यहाँ पर भी लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ के ज्वेलर्स जितने हैं उनको छोटा बड़ा 500 फुट, 1000 फुट, 300 फुट जगह लेनी ही चाहिए, कि अगर नहीं लेंगे तो आपके खुद के बिजनेस जो एक्चुअल चल रहा है उस पर भी इफेक्ट आएगा। जो गडकरी जी से बात हुई थी और हमने उनको बताया कि कई जगह जो भी संयम ने बताया ये फैसिलिटी होती है, उन्होंने बताया कि आप काम शुरू करो, अगर ये हिंदुस्तान में कहीं भी मिल रही है तो मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी भी अगर कुछ चेंज करना पड़े फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री तो मैं पॉलिसी चेंज करने के लिए भी इन्फ्लुएंस करूंगा। लेकिन आप विदर्भ के अंदर ये बड़ा यूनिट यहाँ पे लेके आई है, तो जो जीएसटी का है ये आप लोगों को बता देता हूँ। स्टेट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट है नई जगह पे करते हैं, इसका रूल होता है कि आपने समझो 3 करोड़ का यूनिट लगाया तो या तो 10 साल का पीरियड मिलेगा, या 3 करोड़ अगर आपका 7 साल में खत्म हो गया तो वो पूरा जीएसटी का व्यवहार उसके अंदर मिलेगा। उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपली हाँ बोला है, रिटर्न हमारे पास आया नहीं है, लेकिन अगर हम गोल्ड सुक्का पूरा खाका बना लेते हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट से जीएसटी के नहीं एसजीएसटी का व्यवहार ले लेंगे। 3% की जगह 1.5% का जो जीएसटी है वो 7 साल तक हमको लगेगा नहीं। तो इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होंगी, कॉमन हर एक का चौकीदार अलग अलग जो संभालता वो नहीं रहेगा, मेन गेट कीपर नहीं रहेगा, कितनी सारी चीज़ें हैं जो सारे खर्चे आपके बचेंगे। तो आने वाले भविष्य में अगर हम कलेक्टिव बिजनेस करते हैं और एक जगह पे आके बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छी सेवा दे सकेंगे और हम अच्छा कॉम्पीट भी कर सकेंगे और अपना बिजनेस पे ग्रोथ भी ला सकेंगे। थैंक यू। एक्चुअली समय डिस्कशन में काफ़ी जा रहा है, मैं चाहता हूँ Q&A हम मिस नहीं करें, तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कितना भी सिली हो, आप पूछिए ज़रूर, क्योंकि इतना सीनियर पैनलिस्ट का, एक्सपीरियंस पैनलिस्ट का आपको मंच पे मिलेगा नहीं। तो हमारे पास माइक है, जो आप हैंड रेज करेंगे तो माइक आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप ज़रूर पूछिए, संकोच नहीं करिए, क्योंकि सब अपने ज्वेलर भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अगर नहीं है हाँ, तो उसके 2 मीनिंग रहते हैं। हाँ, मैं और लड्डा जी एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। मेरे को इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं रहता था कि मेरे को सॉल्व ही नहीं करना रहता था, और लड्डा जी को इसलिए नहीं रहता था कि उसको सारा समझता था। तो जैसे मेरे को सॉल्व ही नहीं करना है तो क्वेश्चन ही कभी नहीं आया। अभी जो नितिन गडकरी जी ने बोला कि हम तो विदर्भ में इंटेलिजेंट है, और नारायण राणे जी ने बोला कि हम तो सेठ हैं, हमको कुछ सब कुछ आता है, हमको कुछ नहीं पूछने का, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं क्वेश्चन होगा तो सजेशन दीजिए, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दीजिए, गोल्ड सुक के लिए दीजिए, वो दीजिए एटलीस्ट। मेरे को ये बताइए, जो हॉलमार्किंग में ट्रांसफरेबिलिटी जो बार बार आता है विषय कि आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, वो कितना सही है कितना नहीं, और अगर आएगी तो आपको क्या लग रहा है कब तक आ जाएगी? जो पोर्टेबिलिटी HUID का नंबर पोर्ट, देखो ये जैसे ही हमारा बुलियन अगर नंबरिंग के अंदर आ गया, हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं, संयम, राजेश और आशीष भाई थे, और मंत्री जी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था कि अभी तो इसको रहने दो। तो अभी तो का मतलब ये हो गया कि कभी तो भी आएगा, और मुझे लगता है 24 का इलेक्शन होने के बाद में गवर्नमेंट को ट्रैकिंग करना है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्वे स्टडी बता रहा है कि 1000 टन की जो सोना इंपोर्ट होता है और 200 टन के आगे कहाँ जा रहा पता ही नहीं लग रहा। तो गवर्नमेंट को पता ये लगाना है की आपल्या मराठी बोलते पाणी नेमकं मुरून कुठे राहिलेलं आहे, तर पाणी कुठे मुरते आहे ते त्यांना बघायचं आहे, त्याच्यासाठी सगळं येणार आहे। ओके, तो अभी मैं खाली ये चाहूँगा कि GGS के लिए ज़रा आप विदर्भ में थोड़ा इनवाइट करिए, क्योंकि 1000 विजिटर आते हैं और उनका खुद का बिजनेस भी ग्रो होता है। तो एक बार एक थोड़ा सा ब्रीफ चेयरमैन की तरफ से, वाइस चेयरमैन की तरफ से छोटा ब्रीफ, फिर मैं चाहूँगा कि हम ये इसका ब्रोशर इनिशिएट करके सबको यहाँ पे एक फोटो अपॉर्चुनिटी के बुलाएं, लेकिन पहले इन्वाइट कर लीजिए। GGS होने जा रहा है 2 से 5 अप्रैल। हमने इस बार टॉप ऑफ द लाइन 400 एग्जिबिटर्स एज है, जो हम 50 to 70 एग्जिबिटर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अंदर गोल्ड ज्वेलरी, एंटीक, जड़ाऊ, कुंदन, डायमंड, लूज स्टोन्स, सारी ज्वेलरी हैं इसके अंदर। इसके अंदर एलाइड के अंदर मशीनरी के सेक्शंस भी हैं। और अप्रैल का एक माहौल ऐसा है जब हमने गवर्नमेंट से परमिशंस ली हुई है माल दिखाने के लिए और पार्सल आपको पहुंचाने के लिए। उसके बाद जब इलेक्शन का माहौल आ जाएगा तब माल को पहुंचाना एक लेवल से डिफ़िकल्टी हो जाएगी। 10 मई को है अक्षय तृतीया, उसके पहले जो बाइंग फेस्टिवल है अप्रैल के अंदर
नए साल जिसको बोलते हैं 31 मार्च के बाद, वो यही रहेगा। हमें एयरपोर्ट से अपना होटल से फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप ड्रॉप रहेगा, स्नैक्स के इंतज़ाम रहेंगे, स्टे कुछ लोगों के लिए रहेगा 1 नाइट के लिए, और 1 नाइट आपको खुद कराना रहेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनली हमने आज यूथ विंग से बात हुई, हरडे जी से बात हुई, सबसे बात हुई। 24-25 को हम रोड शो करेंगे दुबई के अंदर, और जो यूथ विंग है उसको हम चाहेंगे कि 24 फरवरी को एक मीटिंग जिननेक्स्ट की वहाँ पर करें, जहाँ पर वो एरिया वाइज दुबई, शारजा और बाकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दुबई के, उनको कवर करते हुए वहाँ की जिम्मेदारी ले फॉरेन बायर्स की भी, ताकि 400 बायर जो हमारा यूथ विंग है वो लेके आए हमारे शो के अंदर। 24 फरवरी का आपको डेट दे दिया है मेरी राजेश भाई से बात करके। सो आप खुद प्लान करें, 10 लोग आप लाएँ, 10 लोग यूथ हम लाएंगे और 10 लोग हम चलेंगे। टोटल 30 मेंबर्स होंगे पूरे इंडिया से। वहाँ जाके एक इवनिंग के अंदर हयात के अंदर हमारा मीटिंग रहेगी। वहाँ के लोकल ज्वेलर से 25 को मीटिंग रहेगी। 26 को हम बाकी अगर चाहें तो कुवैत या सऊदी को कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि 400 इंटरनेशनल बायर्स को लाया जाए। वहाँ के जो फॉरेन बायर्स कैसे फॉरेन के जो रिटेल शोरूम्स अपना ज्वेलरी चलाते हैं, अपने शोरूम चलाते हैं, वो आप देखेंगे कि 500 स्क्वायर फीट की दुकान है और रोज का 2 किलो 2.5 किलो माल बेच रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग 3-3 हज़ार फुट का माल रखते हैं, फिर भी 500 ग्राम बेच दिया तो घर जाके बोले वाह वाह मज़ा आ गया। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको भी हम लोग जो क्लोज डोर मीटिंग है उनमें बुलाएंगे, उनकी दुकानों में आप लोगों को लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से व्यापार हो रहा है। तो जीजीएस में भी आप लोग आए, अपना विजन बढ़ाएं, अपनी सोच बढ़ाएं, और 1 तारीख को वहाँ पर मुंबई पहुँचें। 2 तारीख से इवेंट चालू होगा, 2-3 को रहें, 4 शाम तक रहें। 4 शाम के बाद आप लोग वापस जा सकते हैं अपने अपने जगह पे। और पूरा मुंबई में 7 दिन जो भी पैसा इकट्ठा होता है जीजेसी में, वो आपके लिए पीएमएलए, हॉलमार्किंग, कोई भी लॉ को गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए, गवर्नमेंट को समझाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग लॉयर्स जो टीम लगती है उसके ऊपर ही खर्चा होता है। सो हेल्प अस टू हेल्प यू ऑल। हमारा टारगेट है कि इस एग्जीबिशन में भी हमारा 25 से 30 टन का व्यापार हो। आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों की सब साथ रहेगा, तो आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी सोच, आपके प्रोडक्शंस, कैश क्रेडिट में माल, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी जीजीएस के अंदर। सो ओवर टू राजेश भाई। राजेश भाई, आपके नेतृत्व में 1000 से ज़्यादा लोग आने चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी है, आपके यूथ विंग की जिम्मेदारी है, और आपके पूरे साथ में ZCM जो इस यहाँ की जिम्मेदारी है, आपको लेके आना है सबको। ओवर टू यू। बिल्कुल संयम भाई, और मैं बिल्कुल यकीन के साथ आपको यकीन भी दिलाता हूँ कि 100% यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में जितने फिगर्स जीजीएस में जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा फिगर्स अगर कहीं से होते तो विदर्भ के होते। तो इसमें कोई दो मत नहीं। पास्ट भी अच्छा था, प्रेजेंट भी अच्छा है, और फ्यूचर भी इसका बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। मुझे ना एक चीज़ आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी लगती है HUID को लेके, और डुप्लीकेट ये फेक हॉल मार्किंग होती है ना, उस पर ज़्यादातर यहाँ पे रिटेलर्स है या होलसेलर थे, और आजकल आपको पता पड़ गया है कि अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी ज्वेलर्स की थोड़ी ना थोड़ी आई गई है। जब भले ही वो हॉलमार्क सेंटर करता है, बट ज्वेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो उसको बेचता है। तो आप जब भी आपके पास कभी भी आप व्यापारी से माल लेते हैं, वो कोई भी होलसेलर हो, फर्स्ट सेल जिसने भी किया हो, लेकिन आप ज़रूर उसका QC करिए, ऐप में जाके वो चेक करिए कि वो माल सही में उस हॉलमार्क सेंटर ने प्रॉपर चेक किया है, उसका पोर्टल पे वही वजन है, वही नाम है। क्योंकि अगर वो सब आप नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको तकलीफ जा सकती है। तो आप अपना QC काफ़ी मजबूत कर लीजिए। और जीजेस जो मेन शो अभी चेयरमैन ने कहा, संयम भाई ने, मैं यही कहूँगा ये हमारा अपना शो है, और अपने शो में अपने लोग नहीं दिखे तो मुश्किल जाएगी। क्योंकि हमें रिटर्न टू सॉइल जिसे कहते हैं कि आज मिट्टी ने हमें सब कुछ बनाया है। आज अगर इस मिट्टी को कुछ देने का समय मांग रहा है तो कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई खून नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपका समय मांग रहा है। और यहाँ आने से आपका विज़न ही खुलने वाला है। आपको समझ में आएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और ये सब आप जब विज़न देखोगे तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा आपके बिजनेस में 100% होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए ही समय नहीं निकालते, और समय निकल जाने के बाद फिर आखिरी में ऐसा सोचता है यार ये इतना समय मेरा चले गया, वो वेस्ट हो गया। तो वो अभी आपके हाथ में है कि आपको समय को वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, ये अभी आपके हाथ में। देखिए इतना सब आपने वैल्यूबल समय दिया, AC को ज़्यादा ठंडा है, लेकिन आपके लिए ही तालियां बनती है। थोड़ी तालियां बजाइए अपने लिए, थोड़ी गर्मी भी आएगी, सुस्ती नहीं आ जाए। और मैं ये चाहूँगा
हाँ नहीं, और मेरा ये नेक्स्ट यही है कि ये जो GJS का ब्रोशर है, मैं चाहता हूँ कि सब जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे डायस पे हैं उनको मैं दूंगा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग सामने आएं और यहाँ पे सब हम एक ग्रुप फोटो पूरे पैन इंडिया के लिए एक सर्कुलेट करने के लिए, पैन इंडिया के लिए मैं चाहता हूँ जितने ज्वेलर हैं यहाँ पे सब लोग यहाँ पर आ जाए अपन, ये पूरी फोटो जाएगी पूरे इंडिया के अंदर कि विदर्भ वी आर टुगेदर एंड वी हैव टू ग्रो टुगेदर। रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, सब एडजस्ट हो जाएं। ये फोटोज काफी आगे तक मीडिया में भी जाएगी, टेलीविजन पे भी रहेगी हमारे। आइए कुछ आइए, निनाद हेल्प करो यार सबको, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे सेट करो। थोड़े लोग इधर भी आ जाओ ऊपर, थोड़े यहाँ से ऊपर भी आ जाओ थोड़े। अरे सबके हाथ में ये है क्या निनाद, और नहीं है क्या GJS? ओके ओके अनिल भाई को दो जरा, अनिल भाई थोड़ा 2 लाइन बोलो ना, ये फोटो के चलते चलते मैं बोलो 2 लाइन, इसकी कोई पंक्तियां याद आ रही होंगी आपको, देखो। Thank you. Till we meet the next time.